सभी साथियों को जिंदाबाद, जय भीम, जोहार और सतरंगी सलाम। जमीनी आवाजों की आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। वी आर टुडे इन द 82nd सेशन ऑफ ग्राउंडेड वॉइसेस। ये सीरीज पिछले 2 सालों से लगातार अलग अलग मुद्दों पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों पर, साथ ही बहुत सारे संघर्ष के साथी, एकेडमिक से लेकर जो विशेषज्ञ है और जमीन पर ज्यादातर संघर्ष करने वाले साथी इस पूरे सीरीज में जुड़े हैं। और देश भर से हमने बहुत सारे आवाजें इन 2 सालों में हमने सुनने की कोशिश की है। आज का जो एक प्रकार से विशेष सत्र है, इट इज मार्किंग द 75th ईयर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। और उसी संदर्भ में हमने सोचा कि 3 ब्रॉड जो कॉन्सेप्ट्स, आजादी का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है, सही में मतलब आजादी के संघर्ष से लेकर आज हम देखें तो देश में संविधान के इतने सालों के बाद भी सही में कितनी आजादी देश के आम लोग और जो देश के वंचित लोगों के पास है, वहां से लेकर जो पिछले 7-8 सालों में बहुत ये शब्द जो फेंकी जा रही है, एक तरफ पूरे अच्छे दिन की बात, उसका जो जुमला है, और दूसरी तरफ ये जो नया जो अमृत काल का दूसरा जुमला हमारे सामने लाया जा रहा है, और पूरा राष्ट्रवाद का एक प्रकार से एक फेक नेशनलिज्म की जो पूरी बात हो रही है, एज अगेंस्ट रियली व्हाट शुड बी कमिटमेंट टुवर्ड्स पीपल्स राइट्स, उसका जो पूरा हम एक डाइकोटमी देखें तो बहुत ही स्टार्क तरीके से आज हमारे सामने देश में है। इनफैक्ट बहुत सारे हमारे आज के सत्र में काफी अनुभवी साथी अलग अलग जगहों से, आंदोलनों से और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, वो अपनी बात विस्तार से रखेंगे। और आज का सत्र का संचालन गीता सेशु जी करेंगी। गीता जी एक वरिष्ठ मीडिया पर्सन है, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, इंडियन एक्सप्रेस और अन्य अखबारों में उन्होंने काम किया है, और वर्तमान में फ्री स्पीच कलेक्टिव नाम का एक इनिशिएटिव है जिसको उन्होंने फाउंड किया है, और लगातार इन सभी मुद्दों पर वो बोलते हैं और लिखते भी है। सो थैंक्स टू गीता फॉर moderating today's session, and also welcome to all our speakers today, including Kavita, Krishnan of All India Progressive Women's Association, Admiral Ramdas, former Chief of the Indian Navy, Comrade Thomas Franco, former General Secretary of the All India Bank Officers Confederation, Ulka Mahajan of Sarvahara Jan Andolan, and of course Nargis, Khalid, Saifi, जो लगातार पिछले 3 सालों से संघर्ष कर रही है। खालिद भाई के लिए नहीं, सभी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उनकी रिहाई की मांग को लेकर वो भी संघर्षरत थे। उनको सलाम करते हुए आज के सेशन को हम शुरू करेंगे। मैं बस एक बात आज हम सभी देख ही रहे, मतलब किस प्रकार से इतने सालों के बाद भी आज भी हमने देखा कि एक दलित स्टूडेंट बच्चे के साथ किस प्रकार से घिनौना हरकत, मतलब उनकी हत्या तक उनके ही टीचर के द्वारा, मतलब एक जाति आधारित जो हिंसा है वो आज भी हमारे देश में दिख रहा है। एक हफ्ते पहले हम कविता, हम सभी साथी दिल्ली में थे, जहां पर गोमपत के छत्तीसगढ़ के साथी आए थे, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से इतने सालों के बाद भी उनको इंसाफ तो दूर की बात, मगर जो साथी उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके ऊपर भी झूठे मुकदमे दायर हो, इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रही है। तो पूरा जो एक ढांचा है, इंस्टीट्यूशनल करोजन से लेकर पूरा वायलेशंस एट एवरी लेवल आज हम देख रहे हैं। तो इस संदर्भ में हम कैसे इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को, आजादी को, अमृत काल को और सही में अच्छे दिन को कैसे देखते हैं, एंड व्हाट डज इट रियली मीन, इसको अगर इफ वी कैन टर्न दिस अपसाइड डाउन, व्हाट डू वी एज पीपल रियली थिंक अच्छे दिन शुड बी, और व्हाट रियली मतलब क्या होगा तो अमृत काल होगा, वो शायद हम आज के हमारे सभी स्पीकर्स के द्वारा सुनेंगे। एंड थैंक्स टू एवरीवन हु हैज जॉइंड अस आल्सो इन द ऑडियंस। हम कोशिश करेंगे कि सेशन दोनों हिंदी और अंग्रेजी में रहेगा, एंड वील हैव वेरी ब्रीफ समरी ट्रांसलेशंस ऑफ between English and Hindi. And with these few words of welcome, I request Geeta to begin the session. Thank you so much, Meera, and thank you NAPM for organizing this Grounded Voices online meetings. This is the 82nd session, and it has been going on from last January. A very consistent effort to bring in some of the best voices in this country, and some of the people who have really worked hard and with great commitment towards speaking and bringing their thoughts to all of us. So I'm really
honored that I'm going to be moderating today's session. We are discussing today Azadi, Amrit Kaal, and Achhe Din. Now, we're all very familiar with the cry for Azadi. There has never been a moment when the voice for freedom has ever abated, or any corner of the country where the slogan for Azadi has not been raised with passion, with sincerity. Our freedom from colonial rule was very hard won, and the sacrifices of our freedom fighters is the stuff of legends. Today, while history is being erased and rewritten, and when those who sought to harm India's independence movement are being honored, we are in a situation today where it is vitally important to still speak of Azadi and the need for Azadi. Yet, freedom still remains elusive for scores of citizens. We still have to fight for some of our most basic civil liberties, the right to free speech, the right to form associations, the right to dignity, employment, education, health, freedom from violence, discrimination on the basis of caste, religion, or gender, as Meera has just told us about these absolutely horrific instances of violence on a daily basis. Achhe Din, which we also are supposed to be speaking about, has become a mockery. It's really a mockery for scores of citizens who skip a meal or go to bed hungry. There is the 2021 Global Health Index, Hunger Index, which says India ranks 101 out of 116 countries, and it has a score of 27.5, which is considered part of the serious category. According to the FAO Suite for Food Security Indicators, India's prevalence of undernourishment values for 2015 to 17 and 2018 to 20 is in the range of 14.2 to 15.3 respectively. In terms of employment, the Center for Monitoring Indian Economy says the employment rate has fallen to 390 million in June 2022, the lowest in 2 years. 8 million jobs were lost in rural India, and 2.5 million salaried jobs were lost. Health indicators are just as frightening. As the late Keshav Desiraju had said, public health is about social justice. And with increasing privatization, how do we achieve quality, universal health care? The scenario with education is just as alarming. A UNICEF report says that poor quality education leads to poor learning outcomes in India, which ultimately pushes children out of the education system and leaves them vulnerable to child labor, abuse, and violence. Another topic that we are supposed to discuss today is Amrit Kaal. And frankly, how does one even address this term, which is borrowed from Vedic astrology? What does this term saturation of development even mean? We are fortunate today that on the eve of 75 years of India's independence, we will hope to reflect on the journey of India since independence. And we have an excellent team of speakers today to help us to take stock. And with their vast experience and their devotion to struggle, we also wish to look towards the future. We will be unpacking what these notions of Amrit Kaal and Achhe Din are, and we will also look towards the future and the challenges that we face. Our first speaker is Admiral Ramdas, and Admiral Ramdas really needs no introduction for any of us. He's a very familiar and very beloved face for all of us. The former Navy chief. He has been in the service of this country for more than 5 decades, recipient of many gallantry awards, and most importantly, a very, very important voice for peace. He and his partner activist Lalita Ramdas have been champions for such a wide range of causes, and they are people who we all look forward to and look up to all the time as very, very important radars as we negotiate so many different challenges, from Indo-Pak peace, anti-nuclear efforts,
constitutional values, electoral accountability, they are beacons for us. So I'd like to invite Admiral Ramdas to speak to us first, and then we will have all the other speakers. I will introduce them as we call them. Admiral. Thank you, Geeta. Thank you, Geeta, for those lovely words of introduction. And I'm myself surprised that there's somebody like that called Admiral Ramdas around. It's just very nice to hear that. Not at all. Now, I will just, for reasons well known, I'm getting on and I don't wish to make too many mistakes. So I've got a written script. I'll read it out from there. It won't take long, I hope not. And if it does get too long, kindly rap me on the knuckle and say, enough is enough. Okay, here I go. So a few thoughts on what Azadi or freedom meant to me. I was a young boy of 14 when we made our tryst with destiny on that midnight hour of August 14th, 15th. We listened to the inspiring speech by Nehru, gathered round our tiny little radio. Next morning, August 15, 47, I can clearly remember even today, 75 years later, running from my home in Bengali Market to the Princess Park near India Gate. I was one among millions of exuberant citizens who watched the first Prime Minister Jawaharlal Nehru unfurl the Indian national flag, the Tiranga at the same time as Admiral Lord Louis Mountbatten, the last Viceroy and first Governor General of India, hauled down the British Union Jack. I cannot ever forget the feelings that swept over us as we were all caught up in the sheer delirium of Azadi. It was also on that occasion that this wide-eyed 14-year-old, planning to join the forge, was so fascinated by the immaculate white uniform and shining medals worn by Lord Mountbatten that he was inspired, that I was inspired to join the Navy. It was shortly after independence that it was decided to create a National Defense Academy at Khadakwasla, Pune, and inaugurated in December 1954. Meanwhile, I joined the Inter-Services wing of the then existing Armed Forces Academy, and we were accommodated in the erstwhile prisoner of war camp in Clement Town, Dehradun, in January 1949. This served as our home and our school and our training ground for 2 years till we passed out in December 50. We didn't literally pass out. That is the phrase we use for graduating from a place. We were on an idealistic bunch, full of josh and the endless possibilities of what lay ahead for us young men in a free and Azad India. Our first headmaster, Jack Gibson, made sure that he introduced his first batch of future service officers to the fundamentals of newly minted constitution with all its exhilarating and solemn promises of justice, equality, liberty, and fraternity. Adopted in January 50, when India became a republic. My belief in and loyalty to that holy book, the Constitution of India, has continued to be the guiding light for all my actions and future decisions. We all take an oath of loyalty to the Constitution when we are commissioned. Coming to the present, namely August 14, 15, 2022, being widely celebrated as Azadi Ki Amrit Mahotsav, I am about to enter my 90th year on September 5th, 2022. That's barely a couple of weeks from now, which was to celebrate as Teachers' Day. And I'm about to enter 5th of September, which will be celebrated as Teachers' Day to honor that late teacher and great President of India, Dr. S. Krishnan. Yes, India has come a long way from where we were. But at the same time, my first set of thoughts today is how after 75 years, we have failed our children by accepting a totally skewed, unjust,
and discriminatory education system in the new India, where we had made promises of justice, equality in the new India, and liberty for all. Poverty, unemployment, and illiteracy are rampant, and we have failed to achieve the promised goals in most of the basic areas and universal developmental benchmarks. Large numbers of children remain outside reach and access to education. A majority are consigned to an indifferent and poorly resourced government school system and are virtually pushed out of schooling, though we refer to them as dropouts. This has resulted in third-rate education system for the bulk of our children and quality education for a small elite. We need to ask ourselves what Azadi means to these children and their families. Certainly, it is very different from the means and the mass production of synthetic tirangas and extortions to fly them from every home in the country almost by executive fiat. If we were truly a democratic republic and Azad, we had hoped we would not be seeing the demise of many of our time-honored constitutional institutions and the plethora of draconian laws that have been introduced over time to control and often to intimidate our own citizens. So there are many points to ponder as we look at Azadi. Next question we are addressing today is about AMRIT KAAL, loosely translated as an era of elixirs. To be very honest, I had completely forgotten what this was about and had to take the help of Professor Google, great chap is, to remind me that depending on the ideology or mindset of who was speaking, there were many different versions. And we can look at a few for a start here. And this one explanation of the origins of this phrase, I quote. The term comes from Vedic astrology. Amrit Kaal is the critical time when the gates of greater pleasure open. Amrit Kaal is considered the best and most auspicious time, I beg your pardon, auspicious time to start new work. From Millennium Post is this view from a supporter. Quote, Prime Minister has given the mantra of Amrit Kaal, a quarter-century period in which India must strive to assume the status of a global power, recognized for her ability to do things differently. Amrit Kaal stretches from 75th year of India's independence to the centenary of her freedom in 2047. For decades in Nehruvian India was compelled to base herself on shallow philosophies and vacuous visions of a great power status. Unquote. Most papers refer to the finance minister, Ms. Sitaraman, repeatedly using the term Amrit Kaal while presenting the union budget. We are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kaal, the 25-year-long lead up to India at 100. Another paper describes Amrit Kaal. Most papers refer to that. The budget lays a parallel track of a blueprint for the Amrit Kaal, which is futuristic and inclusive, directly benefiting youth, women, farmers, the scheduled castes, and the scheduled tribes. Another paper describes Amrit Kaal as aimed to deriving the best in every field, aiming to better the lives of citizens, lessen the divide between villages and cities, and reduce government interference
in public life. Some are more critical and nuanced. I quote, "The Union budget 2022-23 was anything but what a budget should be. It gave a grand idea of the future, but not much of this intent was translated into monetary provisions." Finance Minister repeatedly used a phrase tendered on social media, AMRIT KAAL, which loosely translates to the era of elixir. It points out that there were no references to the promises made for India at 75. From becoming a $4 trillion economy to generating employment for women, doubling farmers' income, and eradicating poverty, there are some 41 targets under this strategy, of which at least 17 have a deadline in 2022. If it appears that the strategy, all these targets have been given a pass, with the government directly taking us into the Amrit Kaal and supposedly extending all New India targets to 2047, the centenary of India's independence. The all-important promise of doubling of farmers' income, the biggest and most critical target to be met this year, was not even mentioned. The size of the economy was also talked about, although the finance minister said to various media outlets later that India was headed to becoming a $5 trillion economy. I have no doubt that other colleagues will surely comment on the above, but purely as a former military person, here are my concerns about any notion of Amrit Kaal. Sadly, this appears to be one more attempt to divert attention of the public from some of the key concerns and travails of our people. In addition, politicization of the armed forces has been steadily on the increase under this regime. And there is a disappointment, a disappointment that the president, who is the supreme commander of the armed forces, and the chief election commissioner have chosen to remain silent despite appeals made by veterans over this period. The traditional distancing of the armed forces from politics has been severely compromised. And not even the promised one rank, one pension to veterans has been given. All of this does not bode well for national security, nor indeed for human security. Finally, to ACHHE then, the other popular slogan of the day. We need to look at ourselves and introspect on whether we have reached the goals of justice, equality, liberty, as envisioned in the Constitution. Have we as teachers, elders, and citizens paid serious attention to the content and real purpose of education and learning? Did our schools and teachers create minds that could think independently, question, reason, and express their opinions? Have we pushed to build scientific temper in our youth, or are we still governed by superstition and blind belief? Indeed, have we failed to address the problems of those at the bottom of the heap as they struggle with issues of sheer survival, as they endured the hastily announced measures following demonetization, followed by lockdown, not to mention GST, and now Agnipath and Agniveer schemes? Let us not forget the CAA and NRC, which have in turn created protests and insecurities. To my mind, there is little doubt that all of those together have created the greatest hardships for our poor, migrant workers, farmers, Dalits, and Adivasi citizens. In closing, I want to draw your attention to the key word used in the preamble of our Constitution, namely fraternity. Many might not know
that this was especially addressed by Baba Saheb Ambedkar, a year after the former 3 points were made for adoption by the Assembly, Constituent Assembly. As we said in the Navy, you swim or sink together. As a former service person, it was a matter of greatest pride that those of us in uniform did not distinguish or discriminate on the basis of caste or faith or community. The legacy of the bitter communal violence in 1947, some of which I experienced personally, as a young lad growing up in pre-partition Delhi, has unfortunately been carried forward and exacerbated, especially because all political parties have found it convenient to use these divisions for electoral purposes. When this is combined with hugely discriminatory policies on the present regime, based largely on ideology and philosophy of the RSS, it makes a highly precarious situation that we are seeing today, with democracy itself fragile and uncertain. An India where Dharma Sansads openly call for genocide of Muslim minorities and Muslims in particular, even calling for the armed forces to take up arms against them, is violative of the fundamental principles and promise of fraternity. So too, the openly announced intention to create a new constitution based on the Manusmriti and Varna theory, also announced by a Dharma Sanskrit. So this 75th anniversary of our independence is a moment for serious introspection and reflection. And in closing, I would like to share a message originally in Marathi, which I received this morning. And I'm making a translation in English for the benefit of some of us. Sahib, you are telling us first bang our thalis, then light our diyas and hoist the national flag, the tiranga on our homes. That's fine. But have you stopped to find out if there is rice in our thalis? Is there oil in our diyas or to fill? Or even if there is a house on which to fly the flag? Jai Hind. I fear the basis for Azadi is threatened. Amrit Kaal is an avoidable diversion. And we have a long way to go to achieve Achhe Din. But I still have faith in the power of our people and the Constitution. And we will together need to work to achieve that vision that we will make. We the people, truly Azad, equal, with freedom to practice their faith, to free speech, and above all, the spirit of fraternity and insaniyat. I would like to end there. Sorry, it was longer than usual, but it had to be said. Thank you. Thank you so much, Admiral Ramdas. These words were, every single one of them, very, very precious and very important. You have traversed not just your early years and looking at the India that emerged 75 years ago to the very chilling reality that we are facing today. Before we move to our next speaker, I would like to request Kavita to give us a very quick and short translation. What Admiral Ramdas has given us today is already there in the chat box, and we will try and get a word-to-word translation because all of those words were so valuable. But for now, Kavita, if you could please do a translation. बाद में पूरा हिंदी में करके उसको साझा करेंगे। एडमिरल रामदास जी की बात का सारांश दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए जब मैं कविता आवाज बहुत धीमी है। अच्छा, ओके, हैंग ऑन। अभी भी इट्स बेटर नाउ।
अभी एक हाँ, अभी ठीक हो रहा है। हाँ हाँ, आई थिंक अभी बेटर होना चाहिए। तो मेरे लिए जब मैं 14 साल का था तो अगस्त में जो 14 अगस्त 15 अगस्त की जो रात थी, जिस समय हम आज़ाद होने वाले थे, Of the उस video, समय no. छोटे से रेडियो के इर्द गिर्द इकट्ठा होकर के हम सारे लोग नेहरू जी के उस ट्विस्ट विद डेस्टिनी वाले भाषण को सुने। और दूसरे ही दिन मुझे याद है, 75 साल बाद भी अच्छे से याद है कि कैसे मैं बंगाली मार्केट के अपने घर से होता हुआ इंडिया गेट पहुंचा और वहां पर मैंने तिरंगे को फहराता हुआ पहले प्रधानमंत्री को देखा और जो ब्रिटेन का झंडा था उसे अंग्रेजों का झंडा उतरते हुए देखा। और मुझे बहुत ही तेज जो खुशी की लहर दौड़ी वो मुझे याद है। और उसी समय मुझे लगा कि मुझे फौज ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मैंने लॉर्ड माउंटबेटन को जो उनकी नेवी का जो उनका यूनिफॉर्म देखा, तो मुझे लगा कि उनके जैसा मैं भी नेवी में भर्ती हूँ। तो उस तरह से मैं एनडीए में भर्ती हुआ खड़गवासला पुणे में 1954 में। और वहाँ पर उसके बाद देहरादून में हमारी जो ट्रेनिंग हुई उसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि हम लोग सारे लोग बहुत ही जोश से भरे हुए थे और संविधान को एक तरह से अपना करके उस समय से लेके आज तक उन्होंने अपने संविधान को पूरी तरह से अपने जीवन के लिए एक गाइड के रूप में अपनाया। और हम सारे लोग जब कमीशन होते हैं तो संविधान पर ही शपथ लेते हैं। और अगस्त 14-15 2022 जिसको हम आज मना रहे हैं, तो इसी वर्ष के जो सितंबर 5 है टीचर्स डे, उस दिन मैं 90 साल में मैं अपने 90वां साल में घुसूंगा। और भारत का अगर मैं रास्ता देखता हूँ पिछले 75 साल में, तो हम देखते हैं कि हमने जिस चीज का वादा किया था कि सभी लोगों के लिए न्याय, सभी लोगों के लिए बराबरी, सभी लोगों के लिए आजादी, उन चीजों को लेकर के क्या हमने सही नहीं किया है इस देश के बच्चों के साथ, Kavita, sorry to क्योंकि आज intervene. भी हाँ There are a हाँ हाँ couple हाँ of requests in the chat that the audio is low. It's actually still a bit low. I don't know why that is the case. Hang on a second, just give Yeah. me just a second. Just let me check whether I'm on the wire. Yes, it's still very low. Is it better? Now it's a bit better. बेहतर है। अच्छा अभी ठीक है, मैं इसको उठा के कहती हूँ इस तरह से। हाँ, तो अभी भी गरीबी, अभी भी शिक्षा में बहुत सारी गैप, सभी बच्चों को शिक्षा नहीं मिलता, ये सारी चीजें आज भी हम देखते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जो कि स्कूल से ही उनको बाहर कर दिया जाता है और जो बहुत ही कम बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिलती है, तो ऐसे बच्चों के लिए आजादी का क्या मायने है। और बस पॉलिस्टर का तिरंगा बनाना और हर घर में इसे ठहराओ, इसकी घोषणा करना सरकार के द्वारा, आदेश के द्वारा हम सारे लोग लगाए, सिर्फ इसी से क्या हम इसके बारे में सही तरीके से सोच सकते हैं। तो अमृत काल के बारे में उन्होंने कहा कि अमृत काल के बारे में बहुत सारी चीजें सरकार के पक्ष में बोलने वाले लोग सब कह रहे हैं कि क्या क्या बातें कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें। लेकिन जो लोग थोड़ी आलोचनात्मक स्वर में बोल रहे हैं वो भी याद दिला रहे हैं कि सरकार ने 41 टारगेट्स दिए थे, जिसको उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम पूरा कर देंगे, जिसमें सभी लोगों के लिए घर, सभी महिलाओं के लिए रोजगार और किसानों की जो इनकम है वो डबल हो जाएगा वगैरह, सब पूरा शिक्षा, गरीबी मिटा देंगे वगैरह वगैरह, इस तरह से उन्होंने कहा। और वो सारे टारगेट्स जो है आज सरकार एक तरह से भूल गई, उसके बारे में बोल नहीं रही, बस सीधा उसको कह रही है कि जब 100 साल पूरे हो जाएंगे तब वो सारे टारगेट पूरा करेंगे। तो बस उसको बढ़ाते चल रही है और बड़ी बड़ी जो बातें हैं उसको लेकर के कहीं कोई सोच नहीं रहा है कि क्या मामला है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं क्योंकि सेना में रहा हूँ, तो मैं मानता हूँ कि जो सेना का जिस तरह का राजनीतिकरण देखा जा रहा है, ये बहुत दुखी करने वाली बात है। और प्रेसिडेंट जो देश के प्रेसिडेंट हैं, जो सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्सेस के, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये भी चुप है, इसके बावजूद कि हम सारे लोगों ने उनको अपील किया है, इतनी बार वेटरन से उनसे कहा है, बाकी 1 रैंक 1 पेंशन हो, ये सारी चीजें जो है वो नहीं दिया जा रहा। इससे देश की सुरक्षा के लिए और यहाँ तक कि इंसानों की सुरक्षा के लिए ये अच्छा नहीं है। जहाँ तक अच्छे दिन की बात है, तो हम देखें कि न्याय के मामले में, बराबरी के मामले में, आजादी के मामले में, जैसा संविधान में कहा गया, उन सारे मामलों में एक बहुत बड़ा गैप दिखता है। शिक्षकों की बात ले लीजिए, बुजुर्गों की बात ले लीजिए, बच्चों की बात ले लीजिए, क्या हम सिखा रहे हैं बच्चों को कि वो सवाल पूछें,
बाकायदा बिल्कुल बिना डर के अपनी बात को रखें, साइंस को समझते हुए पूरा एक तरह से अंधविश्वास को हटा करके सोच पाए। ये सारी चीज़ों में हम लोग अपने आप को फेल देख रहे हैं। और लॉकडाउन ले लीजिए, डिमोनेटाइजेशन ले लीजिए, अग्निपथ, अग्निवीर वाला ये सारी जो चीज़ें हैं, इसमें गरीबों की हालत सोचिए, CA/NRC से सोचिए कि कितने असुरक्षित हम देश के लोगों को बना रहे हैं। और उसमें खास करके जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो गरीब हैं और माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, ये सबसे ज्यादा इनके लिए कठिनाइयां पैदा हो। खास करके जो संविधान में बहुत सारे लोग नहीं जानते कि इसमें जो भाईचारे की बात है, वो बात जो है वो पहले नहीं था संविधान के ड्राफ्ट में, उसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने जोड़ा। तो भाईचारे की बात को और मैं सेना में जो रहा, मैं सर्विस पर्सन रहा हूँ, तो वहां पे नेवी में हम कहते थे कि एक साथ आप तैरिए या एक साथ डूबिए। तो आज जो है एक साथ होने के बजाय कैसे बांटे लोगों को, कैसे इस भाईचारे को तोड़े, ये देखा जा रहा है। और जिस पार्टीशन को, भारत जब आजाद हुआ तो कैसे भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय जिस तरह का एक भयानक हिंसा जिसको मैंने भी बच्चा होकर के दिल्ली में देखा था, वही चीज को आज एक तरह से सरकारी नीति बना करके इसमें RSS की विचारधारा के आधार पर ये हमारे पूरे लोकतंत्र को खतरे में डाला जा रहा है। धर्म संसदों से पूरे संविधान को हटा करके इसकी जगह पर मनुस्मृति लाने और वगैरह की बातें हो रही हैं। मुसलमान अल्पसंख्यकों के जनसंहार की बातें हो रही हैं। ये सब भाई इसके सामने संविधान का जो भाईचारे की बात है वो कहाँ टिक। और उन्होंने मराठी में एक जो कविता आज सर्कुलेट किया था, उसका एक ट्रांसलेशन अंग्रेजी में दिया, जिसकी बेसिक बात ये थी कि साहब आप हमें कह रहे हैं कि ताली बजाइए, आप कह रहे हैं दिया जलाइए, अब आप कह रहे हैं कि घरों में तिरंगा लहराइए, लेकिन क्या आपने ये पूछा है कि हमारे थालियों में भात है? क्या आपने पूछा है कि दिया में डालने के लिए हमारे पास तेल है भी? क्या आपने पूछा है कि हमारे पास क्या घर भी है जिसमें हम उस घर में तिरंगा को फहराएं? जय हिंद। इसी तरह से उन्होंने अंत में ये कहा कि हमारी आज़ादी को बहुत भयानक खतरा है। अमृत काल की जो बातें हो रही वो एक तरह से हमें डाइवर्ट करने के लिए, हमें गुमराह करने की चीज है। और अच्छे दिन को सचमुच सच्चा करने के लिए बहुत लंबा सफर बचा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे देश के लोगों में और संविधान में पूरा विश्वास है। और मुझे लगता है कि हम जो भारत के लोग हैं, वी द पीपल, हम सचमुच में एक आजाद, एक बराबर और ऐसी जगह, ऐसे भारत को बना सकते हैं जिसमें सबके पास में अपने धर्म को मानने का, खुल करके जो मन में आए मैंने खुल करके बेबाक तरीके से बोलने का, और सबके प्रति भाईचारा और इंसानियत की भावना रखते हुए आजाद के हिस्से रहने की, जीने लायक भारत जो है जरूर बना सकते। Thank you, Kavita. If all of you had heard Admiral Ramdas, I think the most important aspect that he stressed was about fraternity and about the loss of the very severe danger that we are facing because of the threat to the fraternity that was enshrined in the Constitution, that remains enshrined in our Constitution. Our next speaker is going to be speaking about the struggle that she has had to face in dealing with the kind of what Admiral Ramdas said was the insecurities that came up because of the CAA/NRC. Nargis Saifi was a student of history in Delhi University, and then she got married to Khalid Saifi and had children one after the other. She has teenage children, and her youngest child is 8 years old, and suddenly was plunged into having to deal with the very, very stressful situation brought about when her husband Khalid was arrested in February 2020 by Delhi police in connection with the Delhi violence, and he was charged under the UAP. He's currently, of course, in Mandoli jail in New Delhi. Nargis Saifi has taken up the struggle for the release of Khalid, but she has also been very actively involved as much as she could in the helpline which Khalid Saifi and others started
as part of United Against Hate. She actually started going for the anti-CA protests in Kureji. She got detained for the first time in December 2019. But now she has become somewhat a social media campaigner, self-taught entirely, and has struggled on a daily basis to seek the release of Khalid Saifi. So Nargis, आपके स्ट्रगल के बारे में आप प्लीज हमें बताइए और शेयर कीजिए कि आपकी भी जर्नी कैसा हुआ है और क्या आपको क्या लगता है ये आजादी, अमृत काल और अच्छे दिन के बारे में। सलाम साथियों, जैसा कि आप मेरे नाम से पहचान ही गए होंगे, मैं खालिद सैफी की वाइफ हूँ। अभी खालिद को 2.5 साल हो गया है, मंडोली जेल में हैं वो। आज़ादी, मुझे नहीं पता कि अभी मैं आज़ादी के बारे में क्या कहूँ, क्योंकि मेरे शौहर बेगुनाह होते हुए एक कैद में हैं। एक कैद में रहने वाले को, जो बेगुनाह है, जिसने कुछ करा नहीं है, उसके लिए आज़ादी का बहुत बड़े मायने होते हैं। शायद 75 साल आज़ादी का महोत्सव और ये जो भी हमारे मोदी जी ने कहा है, पीएम ने बोला है कि आप लोग झंडा लगाइए अपने घर के घरों पर, घरों के बाहर, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे और खालिद को अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए किसी तानाशाही या उसको जो भी आप बोलेंगे कि उनके हुक्म का पालन करना है। मेरे घर पे झंडा पहले भी लगता था और अब भी लग रहा है, जबकि मेरे शौहर खुद 2.5 साल से जेल में हैं, बेगुनाह होते हुए भी। यूएपीए जैसे एक्ट के तहत उनको अरेस्ट करा हुआ है। हम फिर भी 15 अगस्त मनाएंगे और मनाते आ रहे हैं, कुछ रुका नहीं है मेरी लाइफ में। मेरी बेटी कल खुद से जाके झंडा लेके आई, घर के बाहर लगाया उसने, उसको बड़ी खुशी हो रही है। उसको एक मतलब वो इतनी छोटी है, उसको भी कुछ भी एहसास नहीं है। उसको ये पता है कि उसके अब्बू जेल में हैं, उसको ये पता है कि सब हो रहा है, पर वो बार बार फिर भी ये कह रही है कि मम्मा कल 15 अगस्त है, मुझे भी झंडा लेके आना है, मुझे भी झंडा लगाना है। पर कहीं ना कहीं मेरे नजर में आजादी अभी नहीं है, हम लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं लगती, क्योंकि आप लिख नहीं सकते, आप खुलकर लिख नहीं सकते, आप किसी की बातों को आप खुलकर बोल नहीं सकते, आप सड़क पर उतर नहीं सकते। आप आजादी का मायने क्या मानते हैं? आजादी आज 3rd क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को पानी के मटके को छूने के ऊपर ही उसको मार दिया, आप इसको आजादी कहेंगे? मेरे शौहर 2.5 साल से सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जेल में है क्योंकि उन्होंने अपने लोगों के लिए सड़कों पर उतरकर आवाज उठाई। जिन लोगों की मॉब लिंचिंग करी जा रही थी, जिन लोगों के घरों को तोड़ रहे थे, जिन लोगों को परेशान करा जा रहा था या जिन लोगों को मार दिया गया था, उन लोगों के लिए सड़कों पर उतरकर कभी जंतर मंतर और कभी कहीं वो आवाज उठाते थे। क्या सिर्फ इस वजह से उनको जेल में डाल दिया गया? और जेल में डालना तो जेल में तो डाला ही डाला, साथ में उनको सिर्फ और सिर्फ सीए एनआरसी प्रोटेस्ट, जितने भी हमारे यहाँ महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, उनका साथ देने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए उनको इतना टॉर्चर करा गया कि उनको 4 महीने के लिए व्हील चेयर पे बिठा दिया, उनके दोनों पैरों को फ्रैक्चर कर दिया गया, उनको इतना मारा कि उनके पूरे बदन से खून निकल रहा था, उनको कम्युनल गालियां दी गई थी, उनको एनकाउंटर तक के लिए भी बोला जा रहा था बार बार। मतलब हमें ये नहीं पता चल रहा था कि जिस दिन उनको अरेस्ट करा था कि मेरे शौहर कहाँ हैं, पूरा दिन गायब हो गया, मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। ये सब हालात भी मैंने उनके 27 फरवरी 2020 को जब मैं मंडोली जेल में मिलने के लिए गई सुबह में, तब मैंने उनको देखा कि उनके किस तरीके से हालात थे, उनको कितना मतलब उन पुलिस वालों के अंदर कितना गुस्सा और कितनी हैवानियत भरी हुई थी, वो मैंने उनके चेहरे से देखी। उनके पैरों में फ्रैक्चर था, उनके हाथों पे डंडों के निशान थे, उनके बाल नोचे गए थे, स्पेशली उनकी दाढ़ी खींची गई थी जहां से उनके चिन के ऊपर से उनके बाल टूटे हुए थे, उनके नखून के ऐसे खरोंचने के निशान थे उनके चेहरे पे। वो इंसान फिर भी हंस के ये कह रहा है कि मुझे कोर्ट पर, मुझे संविधान के ऊपर, मुझे अपने लोगों के ऊपर इतना यकीन है कि मैं यहाँ से निकल के आऊंगा। मैं उस दिन से पहले मेरी जिंदगी मेरे घर में थी, मैं अपने शौहर और अपने बच्चों में ही रहती थी।
मैं खालिद के साथ कभी कभार किसी प्रोटेस्ट में चली जाती थी, पर उस दिन के बाद खालिद ने जब मुझे समझाया कि अब तुम्हें ही सब देखना है, तुम्हें हिम्मत बांधनी है, तुम ही हो, अब अपने बच्चों के लिए तुम ही अम्मी हो और तुम ही अब्बू हो, तो वो चीज, उनकी जो मुस्कुराहट थी, इतनी टॉर्चर सहने के बाद में, इतना सब कुछ होने के बाद में, जो उनके चेहरे की मुस्कुराहट थी, उससे ही मुझे हिम्मत मिली, और वो मुस्कुराहट आज तक है, बनी हुई है उनके चेहरे पे। तो वही चीज सब मुझसे बार बार कहते हैं कि आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। मैं उनसे कहती हूँ कि अगर मुझे जब हिम्मत चाहिए होती है ना, तो मैं खालिद के पुराने वीडियोस देख लेती हूँ, जो वो सड़कों पर आवाज उठाते थे सबके लिए, वो लोगों के लिए आवाज उठाते थे, मैं उनके फोटोज देख लेती हूँ, जिसमें वो संविधान, जंतर मंतर पे संविधान का एक वो फर्स्ट पेज होता है, उसको पढ़ रहे थे। मैं उनके वो इनकलाबी नारे सुन लेती हूँ, मैं उमर के इनकलाबी नारे सुन लेती हूँ, मैं उस गुलफिशा का चेहरा, मैं जब कोर्ट जाती हूँ, मैं उस बच्ची का गुलफिशा का चेहरा देखती हूँ, उससे हिम्मत मिलती है मुझे। बाकी जितने भी लोग हैं, जब हम कोर्ट में जाते हैं, तो जब मैं उनके परिवार से मिलती हूँ, तो हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके ना एक दूसरे का गम बांटते हैं, ऐसा लगता है कि एक ये परिवार बना दिया है इन लोगों ने। वहां पर कोई ऐसा नहीं है, नताशा, देवांगना, हम लोग सब ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कब से एक दूसरे को जानते हैं। मैं पहले कभी किसी से नहीं मिली थी, मैं पहले कभी किसी को नहीं जानती थी, पर अब 2.5 साल से हम लोग जब कोर्ट में मिलते हैं, तो हम एक दूसरे से बातें करते हैं। पर अभी जो ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की बात कही जा रही है, ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है। ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए नहीं बोल रहे, ये कह रहे हैं कि तुम सारी दुनिया की जितनी भी तकलीफें हैं, परेशानियां, सब एक साइड में छोड़ो और जो मैं कह रहा हूँ वो करो। ये सरासर तानाशाही है, ये आपके ऊपर हुक्म थोपा जा रहा है। आपको, आपके पास पैसे हैं खाने के लिए या नहीं है, पर आपको 20 रुपए का, 25 रुपए का, और अभी तो मेरी बेटी का लेके आई 150 रुपए का झंडा, आपको वो लाके लगाना ही पड़ेगा। आपको अपने घर पे अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए आपको वो झंडा लगाना ही है। आप रोटी खाएं या नहीं खाएं, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। आपके घर तोड़ दिए जाते हैं, पर आपके उस टूटे हुए घर की जो ढेर लगा हुआ है, आपको उसके ऊपर भी झंडा लगाना ही लगाना है। आप, आपके हस्बैंड को, आपके बेटे को, आपके शौहर को, आपके आपके परिवार के किसी को भी उठा के जेल में डाल दिया जाता है। सख्त से सख्त कानून लगा दिए जाते हैं, टेररिस्ट जैसे कानून लगा दिए जाते हैं, आपको देशद्रोही बोला जाता है, आपके आपके बच्चों को मेंटली हैरेस करा जा रहा है, आपको इस हद तक टॉर्चर करा जा रहा है कि आप अपने आप को पागल समझने लग जाओ, फिर भी आपको अमृत महोत्सव मनाना है। आप मनाएंगे क्योंकि ये एक तानाशाही का हुक्म है। डिक्टेटर, मेरे ख्याल से डिक्टेटर यही होता है, जो कहते हैं ना, वो यही है, इसी चीज को ही बोला गया है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आप झंडा लगवाएं, आप सड़क पे खड़े होकर राष्ट्रगान गवाएं, आप जो करना है आप करवाएं, पर आप जो जरूरत की चीजें हैं पहले वो तो मुहैया करवाएं। न्यायपालिका में खालिद, हम लोग इतना लंबा लंबा टाइम हो गया है, 2.5 साल हो गए हैं, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। मैं, मेरे बच्चे, वहां के पुलिस का रवैया इतना खराब होता है बच्चों को लेकर भी, कि खालिद को, बच्चों को टच करने तक नहीं देते, इतने छोटे छोटे बच्चों का भी हाथ झटक देते हैं, बोलते हैं कि खालिद के सिक्योरिटी के लिए है। तो मेरे बेटे का, मेरी बेटी का जवाब, सवाल होता है कि मम्मा, अब्बू को हमसे क्या क्या कहता हूँ, मेरे अब्बू को हमसे किस चीज की सिक्योरिटी चाहिए, मतलब हम अब्बू को कुछ कर देंगे क्या? तो वो इस तरीके के सवाल होते हैं मेरे बच्चों के। अब्बू कब आएंगे? हर ईद, हर रमजान, जितने ईद होते हैं सब पर उनके इंतजार हो रहे हैं, सब पर इंतजार कर रहे हैं वो। मेरी बेटी 6 साल के थे जब खालिद की अरेस्टिंग हुई थी, अब अगले महीने उसका बर्थडे है, 9 साल की हो जाएगी वो वक्त, वो जो चीज वो मिस कर रही है, वो कहाँ से लाऊं मैं? उन लोगों ने तो अपना बस इल्जाम लगा दिए और छोड़ दिया, अब आप झेलते रहिए, आप साबित करते रहिए अपने आप को कि आप देशभक्त हैं। अगर झंडा लगा के देशभक्ति साबित होती है तो भैया
हमारे 45 साल के फोटोज निकलवा के देख लो, हर फोटो में देशभक्ति दिखेगी। खालिद के जितने भी फोटोज हैं, जितने वीडियोज हैं, ऑनलाइन वीडियोज हैं, लाइव आके जितने वीडियोज हैं, वो सब निकाल के देखो ना, सब में देशभक्ति है। खालिद के मोहल्ले में आके पूछ लो, और क्या चाहिए देशभक्ति साबित करने के लिए। बाकी बस केस से तो जो भी है लड़ रहे हैं, और मेरे मुझे जो लगता है कि खालिद को बेल मिल जाएगी। बेल मिलना मायने नहीं रखता मेरे लिए कि अभी बेल मिलेगी, वो तो जरूर मिलेगी, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। पर बेल के साथ साथ जो खालिद के 2.5 साल और जितने भी टाइम अभी वो जेल में निकालेंगे, उसका हर्जाना कौन भरेगा? मेरे बच्चों के, उनके बाप से जुदाई, उसका टाइम कौन देगा? मेरा और मेरे बच्चों का स्ट्रगल जो हम कर रहे हैं अकेले रह के, मेरी सिंगल फैमिली है, मैं और मेरे 3 बच्चे हम रहते हैं साथ में, मेरा स्ट्रगल उसको कौन पूरा करेगा? हमारा कारोबार खत्म हो गया, उसका कौन हर्जाना भरेगा? तो ये सारे सवाल हैं। अगर ये सारे सवालों का आजादी से कुछ लेना देना हो तो सरकार बता दे। जरूर जरूर नरगिस, जो आपने कहा है बहुत ही अहम सवाल है। और आपको कुछ और बोलना है कि आपको कैसा, क्या उम्मीद रखते हैं अभी भी? फिर हम लोग देखिए, टाइम लंबा है, लड़ाई लंबी है, बेल मिलने के बाद भी लड़ाई जारी रहेगी, और बेल मिलना ही मकसद नहीं है, आखिरी दम तक इस केस को लड़ेंगे। जो भी इन लोगों ने झूठे इल्जामात लगाए हैं उससे बाइज्जत निकल के आएंगे इंशाल्लाह। और अपने देश पर, अपने देश के लोगों पर, अपने देश के संविधान पर, बाबा साहेब के संविधान पर पूरा यकीन है। इंशाल्लाह हम लोग जैसे हैं वैसे ही निकल के आएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद Nargis. Or after listening to Nargis, we, to understand the kind of hope and determination that she has. She told us so much about how Khalid has always been someone who fought for his idea of independence and freedom, and was devoted to taking up cases, issues of the community, as we also know about him. It wasn't something that he was was dragged into, because it was something that he was drawn towards, the fight for freedom, the fight for justice, even in his community and his locality. When he got involved with the lynching incident also, because of which he joined United Against Hate. As Nargis says, what can she say about somebody who was innocent and who is today in prison? What kind of Azadi can she be talking about? Something like an Azadi which is not just about what Khalid is facing, but about so many citizens who can't write, who can't speak with freedom, so many citizens who are not able to protest freely and speak out for what they believe in. I think it's important that Nargis speaks about how she also had a lot of hope, and she gets a lot of inspiration and hope every time she feels depressed, and every time she feels somewhat defeated by the struggle that she's facing, to see old videos of Khalid or of Umar or many of the others who are still in jail, completely unjust charges that they are still in jail. And, videos of Khalid reading the preamble to the Constitution, for instance, or even of other videos where Khalid is speaking out for others. So that is something that she gets a lot of inspiration from. And I think that is something that we can also share with her. I think she raises really important points about the entire need to demonstrate this kind of Amrit Mahotsav of Azadi, the way in which
the government is calling upon citizens to do this, but in such a way that people are actually being forced to express this rather than have it come very naturally. As Nargis says, I mean, if you look at old photographs of her and her family and Khalid, you will see more than enough evidence of this celebration of India's independence and freedom, and more than enough photographs and other such evidence, but it doesn't have to be something that is forced or shown to us. I think these are really important points, Nargis. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये सब हमारे सामने शेयर किया है. हमारे अगले स्पीकर है उल्का महाजन, जो एक बहुत ही दूसरी तरफ से लड़ाई कर रही है. She is on a very, very different level of struggle from what we are seeing in by people from the minority communities. She has been organizing Adivasis in Raigad region of Maharashtra for several years now. Since 1990, after her post-graduation in social work, Ulka had formed the Sarvahara Jan Andolan in Raigad. And in 2011, Sarvahara Jan Andolan and the Mumbai SEZ Sangharsh Samiti spearheaded something which was historic, a historic people's referendum in 83 villages in Pain, Panvel and Uran talukas of Raigad district, which resulted in the denotification of 10,000 hectare Mumbai Special Economic Zone. This was historic for a people's referendum, which actually went back to citizens to ask them for their view on whether they should be accepting this kind of very unjust acquisition of land, of very fertile land. Ulka is known for many of the other struggles that she has joined subsequently and that she has spearheaded subsequently, whether it was the struggles of the Katkaris or whether it was for the fight against even environmental destruction in Raigad because of the nuclear power plant and other things. So I'm requesting Ulka to speak to us now. She has a bit of a problem with internet connectivity, but I'm still hoping that we'll be able to sort that out and bring Ulka to this forum. Ulka. शुक्रिया गीता. मैं मेरा वीडियो नहीं ऑन कर सकती क्योंकि इतना बैंडविड्थ नहीं है कि मेरा ऑडियो और वीडियो साथ चले. प्लीज बेयर विथ मी. एडमिरल रामदास जी, ललिता जी, थॉमस फ्रैंको जी, कविता, नरगिस, गीता जी और मीरा और बाकी है बात. सबसे पहले नरगिस जी, खलीद भाई को जरूर ये संदेश हम सब सुना और हम आपके भी साथ हैं. आज आजादी के अमृत महोत्सव की पूर्व संध्या में जब हम ये बात रख रहे हैं, मैं बचपन से याद कर रही हूँ इस दिन को कि जो स्वतंत्रता मनाने की खुशी थी. स्कूल के जमाने से कॉलेज में, बाद में ग्रामीण आदिवासी इलाके काम हुआ. हर साल बहुत खुशी से मनाते आए हैं. करना संग्राम में जिन्होंने या ये एक दिन जिस तरह से हम मनाते आए हैं, ये बहुत जोश देने वाला दिन है. लेकिन अब जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब खुशी की जगह चिंता ने ली है. ये बहुत खुशी की बात होती Have we lost her?
Geeta, I don't think we can hear Ulka. हेलो, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? हाँ, उल्का तो अभी आ रही। आप लास्ट 2 sentences प्लीज रिपीट करेंगे? हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, गीता, बताइए। हाँ, आज उल्का तो आप लास्ट 2 जी हाँ, sentences ये हाँ फिर से दोहराती हूँ। अगर जनतंत्र सुरक्षित होता, देश के कोने कोने में अमन छाया होता और किसी नरगिस बहन की आंखों में आज आंसू नहीं होते, मगर आज ऐसा नहीं है। ये बहुत दुख की बात है कि जिनका कभी जनता पर भरोसा नहीं रहा, जिन्हें संविधान नहीं था, जिन्हें तिरंगा पसंद नहीं था, जिन्होंने आजादी की संग्राम में कभी भी भागीदारी नहीं की, अमृत महल सत्ता में है, पूरे देश का माहौल बिगाड़ दिया है। आजादी के बाद सबसे जनतंत्र विरोधी, हर तरह के आजाद और स्वतंत्र आवाज को कुचलने वाली पार्टी आज ये नया किस्म का फैसिज्म है, फासीवाद, मनुवादी ब्राह्मण्यवादी फैसिज्म। आज घर घर तिरंगा का जो नारा है, झंडा घरों में बेचा जा रहा है और झंडे के साथ देश भी बेचा जा रहा है। पूरा पब्लिक सेक्टर बेचा जा रहा है। वैधानिक अधिकार पहुंचा, इसको चैलेंज करते हुए, चुनौती देते हुए हमने आज यहाँ से नारा दिया है, घर तिरंगा पूछ रहा जनतंत्र का क्या हो, घर घर तिरंगा पूछ रहा संविधान का क्या। आज भाजपा जिस तरह की उनकी सियासत है, उनकी सत्ता 3 चीजों से ज्यादा मजबूत की उनकी कोशिश है, और 3 चीजें वो लगातार फैला देश में। भूख, दूसरा जितनी भूख को जिंदा रखो है, सम्मान को कुचला जाता है, आजादी, हर तरह की स्वतंत्रता को खत्म, कितने सारे लोगों को जेल में डाला है। अभी अभी हमने नरगिस बात सुनी, कितने रखा है, जिन्होंने चुनौती दी, जिन्होंने चुनौती भी नहीं दी, उनको बाकी एक लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठ फैला, और सबसे खतरनाक डरावनी बात कि आगों की सच और झूठ को परखने की नजर ही खत्म की जा रही है। एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कठपुतली जैसे लाया जा रहा है, यहाँ कोई आजाद नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अधिकारियों को अहम जगह पर बिठाया गया ताकि वो हमेशा दम झुकाते रहे, हमेशा कहते रहे कि पसंद वही बात करें। और ऐसे सारे इंस्टीट्यूट में भरे गए हैं, सारे झूठे दावे और लगातार नारेबाज। और गम ये है कि उन दावों में कोई दम नहीं है। 2022 तक सबको घर, आज आजादी के अमृत महोत्सव मनाते हुए इस दिन तक उन्होंने नारा दिया था कि सबको घर मिलेगा, मगर कितनों के घर उजाड़े गए, बुलडोज किए गए, सांप्रदायिक दंगों में कितनों को बेघर किया गया, इसकी कोई गिनती नहीं। हर क्षेत्र में हम पीछे चल रहे, वो शिक्षा हो, आर्थिक विकास हो, समानता हो, सुरक्षितता हो, फेडरलिज्म हो, इन सारे मापदंडों के सहारे आज की सियासत का मूल्यमापन किया जाए तो ये सरकार हर विषय में फेल है। ईडी का डर दिखाकर सारे राजनीतिक दलों को खत्म करने की साजिश की जा रही, सारे भ्रष्टाचारी एक तो उन्हीं की पार्टी में लाए जा रहे हैं या उन्हीं के साथ अलायंस में लाए जा रहे हैं, ताकि
आज पूरी तरह महामहिम कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, मगर असल में उनका नारा है कि मैं ही खाऊंगा, हम ही सिर्फ खाएंगे, किसी को खाने नहीं देंगे। भ्रष्टाचार को जिस तरह पूरी सिस्टम में ढाल दिया है, उसी की सिस्टम बनाई है। महाराष्ट्र में हाल ही में जो किया गया, आप सब उसको जानते हैं, हम सब उसके गवाह हैं। और जिस तरह की विकृत और घिनौनी राजनीति चलाई जा रही है, ये क्या अमृत काल है? इसका डेफिनेशन गूगल भी नहीं कर पाएगा, जिस तरह का अमृत काल वो ला रहे। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बिहार में कहा कि कोई क्षेत्रीय दल अब नहीं बचेगा, सिर्फ भाजपा रहेगा और वही राज करेंगे, ये बात खतरनाक है, मगर ये उनका भ्रम भी है। भ्रम फैलाते फैलाते वो खुद भ्रम का शिकार हो गए। और लेकिन उसमें आशा की एक ही बात है कि तुरंत उसके बाद बिहार में जो रिएक्शन आई, उसने बहुत आशा जगाई है और कई संभावनाओं को खोल दिया है। आगे क्या होता है हम जरूर देखेंगे। इस अमृत महोत्सवी वर्षगांठ पर सरकार का मूल्यमापन तो करना ही होगा, लेकिन इतनी आजादी नहीं बची है कि हम ये खुलकर कर पाए। लेकिन जनता का और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का मूल्यमापन भी होना चाहिए। मेरा जनतंत्र पर बहुत भरोसा है और जनता पर भी बहुत भरोसा है। इस पूरी जो फांसीवादी सियासत है, उसके सत्ता के आधार छीनकर उसको जमीन पर लाना, ये सिर्फ आम जनता कर सकती है। और सारे जनतंत्र पर भरोसा रखने वाले संगठन, मजदूर संगठन, वामपंथी और प्रगतिशील दल साथ में आकर अगर इस पूरे देश में एक व्यापक कॉल दे, सिस्टमैटिकली उसकी एक पूरी प्रक्रिया बनाए, एक दीर्घकालीन प्रक्रिया एक साथ चलाए, तो ये जरूर मुमकिन है। 2024 तक जरूर ये एक साथ ताकत के साथ कोशिश की जाए कि इनको सत्ता से नीचे उतारा जाए और उसमें कोई किंतु या परंतु ना हो। पिछले कुछ सालों में हिम्मत देने वाली बातें भी बहुत सारी हुई हैं। एक तरफ इनका फांसीवाद जकड़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जिस बुलंदी से चलाया गया किसान आंदोलन इसी जमीन पर चला, उस किसान आंदोलन ने बहुत बहुत आशा बढ़ाई है, ताकत दी है, साहस दिया है। और जिस तरह से इस सियासत को ललकारा है किसान आंदोलन ने, वो बहुत बहुत ही अभिमान की और गर्व की बात है। नागरिकत्व संशोधन बिल के मुद्दे पर छेड़ा गया आंदोलन, जिसमें जिस तरह युवाओं की और महिलाओं की भागीदारी रही, खासकर मुस्लिम महिलाओं की जोश भरी भागीदारी रही, और युवा वर्ग का हर राज्य में रास्ते में उतरकर आंदोलन में शरीक होना, ये बहुत ताकत देने वाली बात रही। तो जो बातें ताकत देने वाली हो रही है, उस ताकत को साथ में लेकर आगे हमको बढ़ना होगा। हमारे जनतंत्र की जो नींव है, उस नींव में बहुत कुछ, इस देश की भूमि में बहुत कुछ है। यहाँ विविधता है, ऐसे कई सारे मूल्य है, परंपराएं हैं, आपसी सद्भाव है, संत परंपरा है, गंगा जमनी तहजीब है, जिसके सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। आज के माहौल में दो समूहों से मैं खुद हिम्मत पाती हूँ, वो है देश के किसान और दूसरे हैं मजदूर। किसानों ने तो अपनी हिम्मत और जिगर दिखाई है। आज मजदूर देश भर में एक साइलेंट मेजॉरिटी है, जिनकी ताकत को जगाना होगा, बड़े पैमाने पर उनको संगठित करना होगा। और कोविड लॉकडाउन के बाद जिस तरह लाखों करोड़ों मजदूर रास्ते पर उतरे, जो ताकत उनकी दिखी है रास्ते पर और जो जुनून दिखा है, उसको संगठित करना होगा, उसको एक साथ लाना होगा। ये दो ताकतें बीजेपी के भ्रम फैलाने वाले माया जाल से दूर है और ईडी के डर में फंसने वाले नहीं है। इनमें गांव के मजदूर है, शहरों के मजदूर है,
किसान हैं, आदिवासी है, दलित बांधव है, महिलाएं हैं। संविधान ने दिखाया हुआ और जगाया हुआ जो सपना है वो साकार करना, ये इन्हीं के बस की बात। तो इस अमृत महोत्सवी वर्षगांठ के अवसर पर हमें यह संकल्प करना होगा कि हम लड़ेंगे इन फांसीवादी ताकतों से। आजादी की लड़ाई से हम सीखेंगे, अपनी ताकत पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। फांसीवाद की जो ताकत है वो ताकत हमेशा समाज में, देश में जो मौजूद सत्ता संबंध है उन्हीं को एक साथ लाकर फांसीवाद का पूरी रचना और फांसीवाद की सत्ता खड़ी होती। तो जब फांसीवाद से लड़ना है, इन सारे सत्ता संबंधों के खिलाफ भी लड़ना होगा, जिसमें पितृसत्ता है, जिसमें जातीय सत्ता है, जिसमें कॉरपोरेट पूंजीवाद है। इन सबके साथ इन खिलाफ लड़ना, ये असल में फांसीवाद की लड़ाई है। तो जो आज तक हमने खोया है उस सबको पाना होगा। संविधान की हमारी जिम्मेदारी है। संविधान की प्रस्ताविका में, प्रियम्बल में पहला सेंटेंस ये कहता है कि हम अर्पित करते हैं इस संविधान को। तो इसकी जिम्मेदारी आम जनता के कंधों पर है और मुझे बहुत विश्वास है कि हम सबके, आम जनता के कंधे बहुत मजबूत है और संविधान की रास्ते से जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सरकार भी हो, अगर ढलती है, गिरती है, तो सही रास्ते पर इनको लाना और जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं उनको सत्ता से नीचे खींचना, ये हमारी जिम्मेदारी। और ये सारी ताकत हम इसी भूमि से पाएंगे। आज तानाशाह डरा हुआ है, हर तानाशाह डरता है उन निडर निहत्थे लोगों से जो अपनी वैचारिक निष्ठा पर अटल है, जो डट कर खड़े हैं। ऐसे बहुत सारे लोग इस देश में हैं, लेकिन हम अपनी ताकत को फैलाए नहीं। हमारी ताकत बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए, बटी हुई नहीं होनी चाहिए। इस तरफ बढ़ना, ये एक कॉल हम सब मिलकर इस देश में दे और किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, मुस्लिम, सारे जो अल्पसंख्यक समूह हैं उन सबकी ताकत के साथ इस संविधान बचाने की लड़ाई में आगे बढ़े। यही ये अमृत महोत्सवी वर्षगांठ मनाने के दिन पर हम सबको संकल्प लेना होगा। और हम तो अपनी जगह से लगे हुए हैं। बहुत सारे, कल ही हमारा यहाँ बहुत अच्छा युवा सम्मेलन हुआ और जिसमें आदिवासी युवक युवती साथ में आकर जो ऐलान किया है, संकल्प लिया है, उसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी राष्ट्रीय प्रक्रिया, राज्य में भी एक प्रक्रिया चलाने की हमारी कोशिश पिछले 2 साल से चल रही है। राष्ट्रीय प्रक्रिया के लिए भी मैं एक आह्वान करती हूँ कि बहुत सारे जो नेशनल अलायंसेस अलग अलग है, मोर्चे हैं, वो सब इसका कॉल कल ले दे और इसका एक संकल्प ले कि इन तानाशाही को हम खत्म करके रहेंगे। जो गौरवशाली परंपराएं और ताकत हमने खोई है, उसको पाने की लड़ाई इसी अमृत महोत्सवी दिन से शुरू हो। यही हमारा आज का ऐलान है। सबको जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। बहुत ही उम्मीद और उत्साह से आपने इतने सारे बातें किए हैं। आई थिंक वी रियली हैव a huge amount of hope in what Ulka has shared with us and her vision really for the way forward. As Ulka very correctly said, I think that we have to understand the kind of Brahmanwadi, Manuvadi fascism and ask this very important question. If we are saying Ghar Ghar Tiranga, then what about the Constitution? What about basic democracy and basic democratic values? As she very correctly said, democratic institutions have become puppets, and in the use of the ED to not curb corruption, but to bring in more and more of corrupt forces into the government and into the political complicity of this current government. I think she made very, very important points about the need to look at youth and women
who will give us a lot of the strength, because they are really the backbone of so many struggles that we are seeing today. And struggles are happening. There are struggles today. The farmers have put up a historic struggle, but workers, and I think this is something that she flagged, very important point, that workers are today a silent majority and they need to be awakened, they need to be strengthened. They are, of course, have faced immense defeat over the last several years. And these are forces who are not going to be frightened or cowed down by the ED. She also said very importantly that we really must not divide our strength, and that we must use all the strength of the farmers, of Muslims, of women, and fight for this, a very different kind of Amrit Mahotsav than what is being now pushed onto people. I think it is very, very important and very inspiring. I would like to take off from what she said about workers and about the struggle of workers. We have Comrade Franco with us, our next speaker. Thomas Franco is the joint convener of People First, and he's also the former General Secretary of the All India Bank Officers Confederation. He has been associated with the Center for Financial Accountability and the Jan Sarokar process. He is a very, very important voice on the economy, on public policy. And very interestingly, he also is a steering committee member of the Global Labor University. So he will be speaking about, not just about the struggle of workers, especially with all these labor codes that have completely destroyed whatever the working class and labor movements have struggled for so many years. For the last 75 years, so many of the struggles that they have managed to achieve have just been pushed aside, the stroke of a pen. Thomas Franco, we'd like to hear from you now, please. Good evening to all of you. Am I audible? Yes. Okay. I'm sorry that I had initially some connectivity problem, but I could hear Admiral Ramdas and Mrs. Khalid and also Ulka very well. So I will take from that. I am in a place where the light is not proper, so the visibility of my face may not be that okay. That's fine. Number one, when we talk about Azadi, a poet wrote a small poem saying that we got freedom in the midnight and it has not dawned yet. That is the case with large number of people in this country. For them, the freedom has become meaningless. Number one, the biggest crime all these leaders of the 75 years have done is that they could not provide education free to the citizens. They could not provide health free to the citizens. Even the capitalist countries, leave alone socialist countries, they have ensured that education and health is free for their citizens in most of the cases. Even in the capitalist countries, there are social securities which are available for the unemployed, for the youth, for the elderly. But in our country, we hardly have any social security. And small things given as the public distribution system, rice or wheat, or little bit of electricity, few units of electricity. These are called freebies now. Whereas in this country, the corporates, they are going richer and richer.
In 1922, the wealth of the country was totally different. The top 10% that time, they owned only 6% of the wealth in this country. But it increased up to 1970s. But after 70s, that is 69 bank nationalization, if we see 80 to 83, the things changed. The wealth of the top came down and the bottommost grew because of access to credit through the public sector banks. But 1990, 91, things changed. And today, if we see the top 10% own almost 80% of the wealth of this country. And we have seen the Oxfam report, which talks about 9 families who own more than 50%. So the freedom actually has not really reached the majority of the people in this country. And in this situation, when we look at the economy, it's not that COVID created problem. Even before the COVID, the GDP growth was going down, unemployment was increasing, and the Reserve Bank of India itself has accepted that the economy was on a downfall. But COVID created more situation. But the problem started in 2016. Already we were not doing that well. 2014, this government came into power. The biggest attack on the people of this country was 2016, November 8th, demonetization announced in the night of November 8th. That time, the Prime Minister of the country, after a few days, in a meeting at Gujarat, the recording of which is even now available in the Google, he said that just give me 50 days. I'm going to change the economy of the country. Those who have been looting, they will all be brought to the books. Money kept as black money will be brought back, and you all will get that benefit and your life will change. And if it does not happen, you have the right to even burn me. 50 days, nothing happened. And after that, today we know that they could not get any black money. It was not possible. They were knowing it. It was done only for the purpose of saying that I am a mighty leader. I can do anything in this country and people will support. 102 people died standing in the queue. There are still people holding these old notes. They are not able to exchange. But as per the Reserve Bank of India, whatever money was in circulation, it came back. And after that, they stopped taking. I know that after that, there was still money lying in Bangladesh, in Burma, in Andamans, in some courts, where for some cases, the money was kept as deposit and that could not be changed. So all this demonetization killed the economy. The small entrepreneurs, small traders, farmers, street vendors, all of them lost their life. The biggest group which was affected was the MSMEs, small, medium and micro enterprises. They could not recover. When they could not recover, by that time they introduced the GST. It was totally mismanaged and even now it is mismanaged. And that time
people who were forced to go into this GST system, they are still struggling. There is something called input tax, which is very difficult for you to get back. And once you file a return, every month you have to keep filing a return. And for a small trader, small industrialist, it's a huge task, and chartered accountants are making good money out of it. And whatever income tax returns were filed, all this money they could get back. And there were 108 cases reported in the media during the demonetization of huge catch of new currency, 2000 rupee notes. In Tamil Nadu, the former chief secretary and a man or contractor who is now in the Tirupati Devasam board as a director, both of them had huge 2000 rupee currencies which was caught. And that time I would like you all to recall Mr. P. Chidambaram, who was former finance minister, former home minister. He made a statement that I have doubt that money has reached the hands of few people without going to the banking system directly from the RBI printing press. Even now, the RBI has not disputed it. It has not refuted his statement. Government has not. The man who was mismanaging it as Economic Affairs Secretary, now he is the Reserve Bank Governor. So, one side the demonetization killed, then GST, and now every quarter new items are added into the GST. The rice, you buy rice, it is tax. Then you make idli or dosa out of it in a hotel, and when you eat few idlis, you pay tax for that again. Everything is taxed, that is the indirect tax, whereas the corporates are given so much of relief. By reducing the corporate tax from 35% to 22%, almost 1,80,000 crores was the loss to the government, and the benefit went to the corporates. Income tax, you and me pay 30%, and Ambani, Adani also pay the same 30%. Wealth tax was abolished. So I will come to the alternatives later. That time I will talk more about the tax system. But the economy has been mismanaged, and like Dr. Admiral Ramdas said, the lockdown was at a wrong moment without any assessment. Just 500 cases were reported when this lockdown was announced on March 24. Then it kept on increasing only. There were other ways of putting an end to that. But instead of that, people were made to walk. People died on the road. The migrant laborers situation was miserable. And this took the economy further into distress. And when you compare with the other countries where this COVID did affect the economy, the relief given as direct relief by the government, let it be US or even the developing countries like Thailand, the Philippines, all of them had so much of direct benefit to the people affected, like there were waiver of loans, there were waiver of interest, there were direct cash given, there were allowances given, and you just show your account, the accounts were credited with certain money so that you could survive. Whereas though the finance minister in stages announced 20 lakh crores, only 3 lakh crores was the government expenditure, 17 lakh crores were from the banks as loans, which are not freebies, and these loans are to be repaid. And those people who availed that loan, they are still suffering, and because the economy has not grown. The banking system is a reflection of the Indian economy. If the economy is not doing well, the banks will also not do well. So today we are in a situation, there is stagflation.
The finance minister keeps defending, saying that no, we are better off. You compare with the other countries. When you say that you compare with the other countries like US, she should look at the social security system which is available there, which is not available for the people of this country. And you still quote those countries as examples that their economy is also not doing well. But here, when the economy is not doing well, the rich are not affected. We have seen with facts and figures that during the COVID, the top 1% kept on growing. Their income, their wealth, their profit, everything kept on increasing. Adani, Ambani, Tatas, all of them, they have been making enough of money in addition to the two fellows who are making vaccine also. So the economy is in distress, and the biggest danger is that when the finance minister is not accepting that we are in distress, we are going to have a crash. That is what happened in 2008 financial crisis in US. This is what happened in the South Asian financial crisis. And in my opinion, we are going in a very wrong direction. We are in a great danger. The indicators I will just mention. The price is increasing regularly. We are seeing that the consumer price index is increasing. I don't believe these indexes these people are quoting, but even that is alarming. But practically we are seeing that the price of every commodity is increasing, and the GST is also adding to that. So if they say that the GST return has been good, that is because the price has been increased, so naturally you get more tax. And because of that, your income to the government is more. But the unemployment, they promised 2 crore employment per year. Now they are saying that through Agnipath and all, they will give 10 lakh jobs in the next 2 years. So by 8 years, 16 crores should have been the job created. We are in a position, the unemployment is in peak. 24% of the people who are in the age group of 20 to 24, they are not having job. And the people who are not able to get a job, even after applying in the Manrega scheme, and they have a now e-Shram portal. There are 27 crore people who have registered, and they are saying that they don't have any income, and whatever income they had in the recent past has been less than 10,000 rupees per month. How do they survive? I am practically seeing in all over the places wherever I am going that the beggars, the number of beggars have increased. I am seeing in the streets, including in Chennai in the evening, prostitution has increased. And I am seeing that middle class people who have lost the job, they have started selling small things on the road. And in a place in Kanyakumari, which I belong, in 2 kilometers, one evening I counted 23 eateries are there. Apart from 10 which was there earlier, another 13 has come up now, just selling in the evening some idlis or dosas or some noodles, and none of them are making profit, and after some time they are disappearing. So the situation of the economy is really bad, and government's own advisors, the secretaries to the government of India, in a meeting with Modi ji, has said that what has happened in Sri Lanka can happen to us also. Sri Lanka is a small country. We cannot compare it with India. But the indicators, the price rise, the foreign exchange crisis which is coming, the amount of foreign exchange which is going away, and the dues for this year end, the loans which we have taken, during this 8 years, huge amount of foreign loans have been taken, and by December, a large sum has to be given back, and they don't have money to give back. What they will do is that they will take more loan, and we will get into the debt crisis like we have gone into that crisis earlier.
So now coming back to the banking sector. See, banking sector in the last 75 years, when we got independence in 1947, the banking sector was very weak. Between 1947 and 51, 265 private banks collapsed. Between 1951 to 1967, similarly, more than 200 banks collapsed, all private banks. The Imperial Bank of India, which was doing well, which was a private bank that time, was asked by the government to open some 200 and odd branches in 5 years. They refused. Instead, they said that they will open only 144 branches. And that also they did not do it. Instead, they opened only 63 branches. So in 1955, Imperial Bank of India was nationalized and State Bank of India was created. After that, when State Bank of India was given a target of 400 branches, they exceeded that target. Why I am saying this is that when you are a public sector bank, you obey the rules of the government. You listen to the goals which are fixed by the government of India. But once you privatize, the private banks are not going to hear this at all. Now, you see one example, Jan Dhan account. He claims, Modi ji claimed a Guinness record also. There is again a lot of fraud in that, in the data, but 43 crores account has been opened, they say. Out of that account, 97% of the accounts are opened by the public sector banks, including the regional rural bank. The private sector banks are not interested. But between 1960 to 69, so many mergers, amalgamations, transfer of liabilities happened that the government felt that it was needed that we should nationalize. If you look at the background of nationalization, it did not happen suddenly. Congress at the Lahore Congress, I think, they had passed a resolution that they will nationalize the private banks. But they did not do that. But 1954, All India Rural Credit Survey said only 90% of the credit was going from the organized sector and 91% of the credit to the people was going from the money lenders. Similarly, we had a Mahalanobis committee which said that 10% of the rich are controlling everything. Then we had one R.K. Hasari committee. So many committees went into the details and said that unless you remove the clutches of the big business from the banking sector, the economy is not going to grow and the ordinary people are not going to get credit at all. And 1969, when the nationalization was done on 19 July, it was in a dramatic way. Morarji Desai was opposed and he was the deputy prime minister and finance minister. Mrs. Gandhi forced him to resign. And then she brought up this ordinance, which was passed, signed by V.V. Giri, which was his last signature as president in that time. And after that, he resigned and he went for the next election. How do you see it happening, Comrade Franco? How do you see the situation happening now? Can we talk a little bit about the current situation? And then I'd also like, Meera has said that she will do a very quick translation of what you have said, because it is all really fascinating and important, this history. Sure. But if we can also have time for a little translation, so may I request you to Yeah, I will quickly make your come back final point to, so yes. that we can. Now, the national... In the question and answer, I think there are some questions for you also in the chat box. I can see. That I will take it in We the can second come back round. later. So if you can wind up now, then Yeah. we can See, have the translation. now, Thank after you.
till 1991, whatever goals were fixed by the Nationalization Act, that was fulfilled and exceeded. There were lead bank scheme for development of every district, integrated rural development program, largest poverty alleviation program, and the small credit increased. There are enough of statistics I can quote. But 1991, everything changed. And now what situation we have reached is that the government is very particular that it privatizes the public sector bank. Already IDBI, they want to privatize, though Yes. LIC is running it actually, and it is running profitably after LIC took over. They have already announced that 2 banks will be privatized, and Poonam Gupta and Aravind Pandagiriya say that all the public sector banks should be privatized. Yes. Only SBI should be left out for the short time, and later on they should be filled. This is going to affect the country a lot. Just I will quote few data and I will conclude. See, today small credit is not available. 33% of the credit is going to the corporates who are taking more than 100 crore loans. The small credit, which was at one point of time 98% of the total credit, now has gone down to 30%. So the farmers, the small traders, they are not getting credit at all. And where do they go? They go to the non-banking financial companies for which banks are giving loan, and that loan they are giving to the borrower at the rate of 24%, and even that ceiling has been recently removed from by the Reserve Bank of India. Now they have introduced something called a co-lending model, where Adani Capital will give loans of State Bank of India. The fund will go from State Bank of India. Like this, the smaller people are being pushed to the modern day money lenders, which is going to be a dangerous situation very soon. So what is needed today is that we require more schemes for the larger development of the people. Small loans should be increased. Nationalization goal has to continue. Privatization should not happen. If privatization happens, whatever little education loans, small loans for housing and all that self-employment loan, all this will disappear. So it is time that we fight against this privatization. And I'm not ending with a pessimistic note. I will come back later. There are many progressive things happening in the country which show that, yes, we can bring in a change, and we have that will to do that when we work together. With this, I conclude. Thank you. Thank you. Thank you so much. I must admire the fact that you end on a note of hope, despite all that you have outlined for us, which are really chilling, from the demonetization, GST, and the manner in which corporate tax, wealth tax is abolished. We have the most scary situation really about what is going to be happening with the banking industry and with loans for small citizens, and how corporate control is going to really affect the way in which people can access their own money. We have a short translation that we want to give to everyone because of all the important points that you made. I'm going to ask Kavita to step in with a short translation, and then I'd like to invite Kavita also to speak after that. Kavita again needs no introduction. She's someone who we have all been hearing, and the passion with which she has brought about so many important points and spoken so strongly is something that we're all waiting to hear. Kavita, of course, is the secretary of the All India Progressive Women's Association. She's a Politburo member of the CPIML and Liberation. She wrote this wonderful book, which many of you have definitely read, called Fearless Freedom. And it's a book that she articulated brilliantly
during the entire struggle on the Delhi gang rape, where she spoke about this whole notion of freedom from fear. And it is a catchword, and it is much more than just a catchword. It is something that really is a signal for all of us as we move ahead on the eve of 75 years of the celebration at least of 75 years of our independence. So Kavita, it's over to you. थैंक यू गीता। मैं साथी फ्रैंको की जो बात है उसको बहुत ही संक्षिप्त में बता रही हूँ। उन्होंने बताया कि किस तरह से नोटबंदी जो हुई थी और जीएसटी जो लगा था, नोटबंदी काले धन को खत्म करने के नाम पर लगा, लेकिन आंकड़े दिखा करके उन्होंने बताया कि किस तरह से ये काम तो हुआ ही नहीं, और लेकिन तब भी जो है सरकार उसके बारे में झूठ बोल रही है, जबकि उसका बहुत ही बुरा असर जो है वो हमारे देश के सबसे गरीब तबके पर लगा। जीएसटी की बात उन्होंने की कि देखिए जीएसटी भी जो लाया गया उसमें दाम बढ़े हैं, और उसमें दाम बढ़ाने की वजह से जाहिर सी बात है कि आप टैक्स लगाएंगे तो सरकार के पास में पैसा आएगा जीएसटी के जरिए। लेकिन उसमें जो सच्चाई है वो ये है कि टैक्सेस की अगर आप बात देखिए, जो आम व्यक्ति है हमारे देश में, वो और अडानी अंबानी वो दोनों एक ही रेट का टैक्स देते हैं, और उसमें भी बड़े बड़े जो टैक्स हैं वो बड़े रेट तक माफ होते हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए। तो ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का न्यायपूर्ण टैक्स व्यवस्था है। उन्होंने लॉकडाउन के बारे में बताया कि किस तरह से सरकार बार बार कह रही है कि हमने कितना कितना खर्च किया लॉकडाउन में लोगों को खाना खिलाने के लिए और लोगों की मदद के लिए, लेकिन उन्होंने बताया कि उसमें से सच्चाई ये है कि सिर्फ 3 लाख जो है वो 3 लाख करोड़ वो सरकारी खर्चे से हुआ, और बाकी जितना है 17 लाख करोड़ मेरे ख्याल से उन्होंने कहा, मैं ठीक से आंकड़ा इसमें हो सकता है मिस कर रही हूँ। उन्होंने बताया कि बैंक लोन, वो बैंक लोन था, तो बैंक लोन तो आपको चुकाना होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि आपने बस ले लिया तो आपको सरकार ने कुछ दे दिया है, आपको लोन चुकाना है, और लोग नहीं चुका पाए हैं लोन क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। और जो बैंकिंग की स्थिति है वो एक तरह से देश के अर्थतंत्र की स्थिति को बयां कर रही है। और उसमें उन्होंने कहा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री बार बार कह रही है कि ये जो है हम तो अमेरिका से अच्छी स्थिति में है, हमारे यहाँ उस तरह का संकट नहीं है, सामाजिक संकट कोविड के दौरान नहीं हुआ। लेकिन वो कह रहे हैं कि अमेरिका में तो सामाजिक सुरक्षा नाम की चीज वहां दी जा रही है कुछ लोगों को, हमारे यहाँ तो ये आप दे नहीं रहे हैं, तो वहां आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं भारत के जो गरीब लोग हैं उनके और अमेरिका के लोगों में तुलना आप कैसे कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि कोविड के दौरान आप देख लीजिए कि ऊपरी जो हिस्सा है 1%, वो तो उसका वो जितने बड़े पूंजीपति हैं और अमीर हैं वो और अमीर होते गए कोविड के दौरान, और जो सबसे गरीब हैं वो और भयानक रूप से, और यहाँ तक कि जो मध्यम वर्ग है वो गरीबी में फिसल गया। और इसमें उन्होंने कहा कि खास करके बेरोजगारी के आंकड़े उन्होंने दिखाए, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार आज कह रही है कि 10 लाख नौकरियां ये करेंगे, लेकिन इसका ठीक आंकड़ा मीरा वहां टाइप कर देंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर अपने वादे के अनुसार अगर इस सरकार के वादे को हम सच माने तो 8 वर्षों में 16 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं, उल्टा सबसे खराब बेरोजगारी के दर में हम फिसल चुके हैं। तो श्रीलंका का जो हालत है वो बिल्कुल हमारा हाल हो सकता है, बावजूद इसके कि हम श्रीलंका से बड़ा देश है, क्योंकि हमारे देश में जो विदेशों से जो यहाँ इन्वेस्टमेंट होता है वो एक तरह से हमारे देश के छोर को छोड़ करके जा रहा है। बैंकिंग के बारे में उन्होंने सबसे विस्तार से बताया, और वो बहुत ही संक्षिप्त में मैं यहाँ रखती हूँ। बढ़िया से उन्होंने बैंक में जो राष्ट्रीयकरण हुआ बैंकों का, उसकी कहानी को बताया। उसमें उन्होंने कहा कि देखिए जब देश आजाद हुआ तब से लेकर के बस उसमें जो 3 साल बीते उसमें 200 से ऊपर बैंक्स जो है ये कोलैप्स कर गई। उसके बाद 1951 से 1961 तक जो 10 साल थे उसमें 300 से ज्यादा जो बैंक है वो प्राइवेट बैंक वो कोलैप्स हो गए। उसमें एक जो बैंक था इंपीरियल बैंक, इससे कहा गया कि भाई आप ब्रांचेस खोलो, सरकार ने कहा कि इतने इतने ब्रांच आप खोल दीजिए। उन्होंने मना किया और उन्होंने उसका एक बहुत ही छोटा हिस्सा बस सिर्फ 63 ब्रांचेस खोले। तो इसमें सरकार ने 1955 में तय किया कि उसको नेशनलाइज किया जाए इंपीरियल बैंक को, और एसबीआई बना, और एसबीआई ने ताबड़तोड़ तुरंत जो है वो देश में ढेर सारे ब्रांच खोले। तो ये आपको दिखा रहा है कि लोगों की जरूरत के लिए जो बैंक है वो सिर्फ जब सरकारी बैंक बना, पब्लिक सेक्टर बैंक बना, तब जाकर के ये ब्रांचें वगैरह खुली।
आज भी अगर आप जनधन अकाउंट को लीजिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो धांधली वांधली बहुत है, लेकिन तब भी अगर आप सरकार की भी बात मान लीजिए कि 43 करोड़ अकाउंट खुले हैं, और ये कितना बड़ा रिकॉर्ड है, क्या क्या इसमें से कहाँ पर खुले हैं। तो इसमें जो ज्यादातर हिस्सा है, अगर 3% छोड़ दीजिए, तो बाकी सारा जो है 97% ये पब्लिक सेक्टर में खुले हैं। जाहिर सी बात है कि जनधन के अकाउंट प्राइवेट सेक्टर खोलने में इंटरेस्टेड नहीं है, यानी गरीबों के लिए छोटे जो इसका अकाउंट है वो खोलने में वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो 1960 से लेके 69 तक उन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार मर्जर अमालगमेशन ये होते रहे। तो इसके बाद जो है ये राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया गया, और इसमें एक तरह से बहुत सारी कमिटियों ने रिपोर्ट दिया कि बड़ी पूंजी का जो कब्जा है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, इसको हटाना बेहद जरूरी है, और तब जाके इसको किया गया। आज के बारे में उन्होंने बताया कि देखिए बहुत संकट की घड़ी जरूर है, लेकिन तब भी उन्होंने कई सारी चीजें बताई जो सरकार कर सकती है अगर हम चाहते हैं कि देश को बेहतर करें और गरीबों के लिए खास करके बेहतर हो। उसमें खास करके उन्होंने छोटे लोन्स देने की बात, निजीकरण से लड़ने की जरूरत, ये उन्होंने सबसे ज्यादा जोर देकर के कहा। और बाकी उन्होंने कहा कि और भी बातें हैं बोलने के लिए, सवाल जवाब में वो कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद के साथ ही मैं अपनी बात को शेष करता हूँ, मुझे अभी भी लगता है कि बहुत सारे प्रगतिशील कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं, जिसके लिए हमें लड़ना है। Thank you, Kavita. Ab we want to listen to your take on Azadi and Amrit Kaal and Achhe Din. Please. मैं टाइम देख करके मैं कोशिश करती हूँ कि कम समय में बोलूं, क्योंकि मुझे लगता है बातचीत के लिए भी कुछ जगह बचे, कुछ समय बचे। मैं चाहती हूँ कि जो चीजें हम लोग शायद हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं, कई सारी बातें, मैं सिर्फ इस चीज पर ज्यादा जोर दे करके बात रखना चाहती हूँ कि देखिए, एक तो ये है कि जिस चीज को अमृत काल और अमृत की घड़ी कहा जा रहा है, 15 अगस्त है, कल है, आजादी के 75 साल पूरे होकर के हम खत्म कर रहे हैं उसको। तो आप सोचिए कि आजादी का क्या मायने था, क्योंकि आजादी के मायने को ही बदल देने की कोशिश आज की जो सरकार है वो कर रही है। यानी आजादी का सिंपल मतलब, अगर आप स्कूल के भी बच्चे से पूछें कि आजादी थी तो गुलामी किसी की थी ना, किसकी गुलामी थी, तो वो बिल्कुल साधारण रूप से बताएंगे कि भाई अंग्रेजों की गुलामी थी। और अंग्रेजों की गुलामी हमारे देश के पूरे इतिहास में, उससे पहले जो इस पूरा ये जो भूखंड है, इसमें अंग्रेजों जैसी जो गुलामी थी वो कभी किसी ने नहीं झेला था। उसको जो है हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं, और वो उसके खिलाफ, उसकी वजह से एक तरह से देश पूरा माने अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग सब एकजुट होकर के इस अंग्रेज लुटेरे के खिलाफ लड़ना है कह करके वो एकजुट हुए। और उसी एकजुट होने में और लड़ने में उन्होंने एक तरह से देश की कल्पना की, और देश का जन्म तब होता है एक देश के रूप में। लेकिन आप सुनिए प्रधानमंत्री की बात को, ये केदारनाथ गए थे पिछले साल, यही बात वो कई जगह कह चुके हैं, लेकिन मुझे तब वो खटका जब उन्होंने वहां कहा। तो वहां उन्होंने कहा कि देखिए, ये अमृत वर्ष में आप जो है वो जहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई जहाँ पर हुई वहां भी आप जाइए, लेकिन इस तरह के जो मंदिर हैं केदारनाथ जैसे, वैसी जगहों पे जाइए, क्योंकि यहाँ पर हजार वर्षों के लिए जो गुलामी के खिलाफ जो संत महात्मा लड़ रहे थे, वो यहाँ पर आकर के वो अपना साधना करते थे। क्या मायने था उनका? बच्चा भी बताएगा कि भाई अंग्रेजों का राज तो 1000 वर्ष का नहीं था, अंग्रेजों का राज जो है वो एक तरह से आपका 200-250 वर्ष का है। तो उसमें आप कैसे जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि 1000 वर्ष? तो कहने का मतलब ये है कि वो जो अंग्रेजों के राज वाला वक्त था, उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी, उनका आरएसएस ये बोलना नहीं चाहता, क्योंकि वो उसके बारे में क्या कहेंगे, वो उसके बारे में क्या बोलेंगे। जाहिर सी बात है कि आजादी के उस आंदोलन में वो शामिल नहीं थे। गोलवालकर ने साफ साफ कहा कि शामिल मत होइए, अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ते हैं वो बहुत ही एक तरह से गलत काम कर रहे हैं, जो शहादत देते हैं वो तो फेलियर हैं,
वो तो जिस काम के लिए करने निकले उसको करने में नाकामयाब थे, तब तो जाकर के वो शहादत शहीद बने और क्या क्या, इसलिए ये सब काम करना नहीं है। तो जिस समय पूरा देश शिद्दत से लड़ रहा था उस समय ये तो सेवा कर रहे थे, बांटने का काम कर रहे थे, अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। तो वो क्या कहना चाहते हैं, वो उस चीज को वो अंग्रेजों के राज का समय छोड़ करके वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुगलों ने जब राज किया या अन्य मुसलमानों का जब राजा थे हमारे यहाँ, तो उनके खिलाफ एक तरह से हिंदुओं का जो है हिंदू गुलाम थे और हिंदू जो है वो मुसलमान शासकों के खिलाफ लड़ रहे थे। क्या ये सच है? बहुत साधारण सी बात है, आप उदाहरण ले लीजिए, 1000 उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन आप सिंपल कोई एक उदाहरण भी कहीं से भी उठा लीजिए तो आप देखेंगे, हल्दी घाटी की लड़ाई को ही ले लीजिए, उसमें आपको मिलेगा कि अगर मुगल लड़ रहे हैं, राजपूत लड़ रहे हैं, जो जो मुगलों की सेना है उसका सेनाध्यक्ष जो है वो राजपूत है, राजपूतों की सेना का जो सेनाध्यक्ष है वो मुसलमान है। तो जाहिर सी बात है कि शासकों में जो लड़ाई थी उसको ये धर्मों की लड़ाई बताना चाह रहे हैं और धर्म को मानने वालों की लड़ाई मानना चाह रहे हैं, जबकि देश में इस तरह के माने तमाम हिंदू लोग एकजुट होकर के मुसलमानों के खिलाफ लड़े, ये तो हुआ ही नहीं। तो अंग्रेज जब आते हैं तब जाकर के 1857 की लड़ाई, पहली आजादी की लड़ाई होती। मैं उस लंबी कहानी को नहीं बता रही, लेकिन इतना मैं बताऊंगी कि हाँ, उस आंदोलन में जाहिर सी बात है कि बहुत सारे मान्यताओं वाले लोग थे। कुछ थे जो मैंने अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों को जाना चाहिए और भारत का अपना शासन होना चाहिए, इस चीज को सब मानते थे। लेकिन वो देश कैसा होगा, उसमें देश वो किन मायनों पे चलेगी, इसमें अगर आप गांधी जी को पढ़िए, अगर आप नेहरू जी को, गांधी जी नेहरू जी में ही बहसें थी, नेहरू जी पटेल जी में ही बहसें थी, पटेल जी गांधी जी में बहसें थी, और भगत सिंह को ले लीजिए, अम्बेडकर को ले लीजिए, तो बहुत अलग अलग विचार हैं इनके। और अम्बेडकर जी को ले लीजिए तो वो एक सामाजिक गुलामी के खिलाफ लड़ने पर जोर दे रहे हैं, और उसमें कैसे आजादी हो सकती है, एक बिल्कुल ही ज्यादा गहरी आजादी की बात करें। भगत सिंह भी एक कह रहे हैं कि इंसान द्वारा इंसान का शोषण ये खत्म हो जाए, ऐसी दुनिया के लिए जब तक हम हासिल नहीं करते तब तक हम आजाद नहीं। तो किस तरह की विजन है इन तमाम लोगों की, और इन सब में बहसें हैं। लेकिन कौन सा आंदोलन जिसमें बहसें ना हो, बहसों के साथ साथ लेकिन इन सब का जो विजन है हमारे देश को लेकर के, उसके बारे में आज हमको सोचना चाहिए कि क्या उसे हम पूरा करने के कितना नजदीक हैं, उसमें मैं आऊंगी। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि उसमें एक कॉन्ट्रास्ट भी करने की जरूरत है कि आप सोचिए कि किस तरह से जो ये है जो आपका गोलवालकर है या आरएसएस है, वो किस तरह का देश सोच रहे थे। अगर आप गोलवालकर की बात पढ़िए तो गोलवालकर इसमें, और मैं इसमें कहूंगी कि देखिए वो वी और आर नेशन हु डिफाइंड एक किताब है, वो तो आरएसएस वाले आज जो है कहते हैं कि ना ना वो तो गोलवालकर ने नहीं लिखा। वो कन्नी इसलिए काट रहे हैं अभी क्योंकि आजकल थोड़ा एम्बेरसिंग हो गया है कि जो है हिटलर भक्त किसी को, वो आप कैसे देशभक्त बता पाइएगा हिटलरशाही की बात को बड़ा अच्छा कहने वाले। लेकिन आप बंच ऑफ थॉट्स को उठा लीजिए, तो बंच ऑफ थॉट्स में गोलवालकर जिस तरह की बातें कह रहे हैं, एक सेकेंड मुझे एक ये दीजिएगा। तो इसमें जो गोलवालकर की किस तरह के देश की बात करें, बहुत सरल तरीके से मैं कहूंगी कि जरूर पढ़िए, लेकिन उसमें एक बात जो है कि ये बिल्कुल ठीक उल्टी बात कह रहे हैं। अगर वो सीधा ये कह रहे हैं कि ऐसा देश जिसमें कैसे सारे लोगों को हम जोड़ें, उसका ठीक उल्टा वो कह रहे हैं। और उसमें वो कह रहे हैं कि इस देश में सिर्फ हिंदू रहने लायक होंगे, और हिंदू कौन है उसकी परिभाषा भी हम बताएंगे। हम जिसको हिंदू कहेंगे उसको हम हिंदू मानेंगे, और उनको यहाँ रहने बोलने आराम से रहने की आजादी होगी। और वो कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता किस चीज को वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी तरह के अधिकारों के लिए आप कहते हैं, चाहे आप तमिल हैं और आप अपनी भाषा की अधिकारों की बात करें, अगर आप दलित हैं और या ओबीसी हैं आप आरक्षण की बात करें, अगर आप गरीब हैं और आप अपनी जमीन के अधिकार की बात करते हैं, अगर आप महिला हैं महिलाओं की आजादी की बात करते हैं, अगर आप माने बौद्ध हैं, जैन हैं, मुस्लिम तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ तक कि बौद्ध जैन वो कह रहे हैं कि बस आपने हिंदू नहीं कहा खुद को तो आप जो है वो बिल्कुल आप देश को तोड़ रहे हैं, आप देश के टुकड़े कर रहे हैं। तो ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग ये सब कहते हैं, ये सीधा गोलवालकर से आया। और अभी 2 दिन पहले ये आया कि हिंदू राष्ट्र बनाने का जो ब्लूप्रिंट है वो ये तमाम संघ के लोगों ने कहा, एक प्रयागराज में धर्म संसद में ये फरवरी के महीने में प्रपोज हुआ,
और वो इसमें फिर से इलाहाबाद में इसको और ये करने वाले। इसमें ये क्या क्या देखते हैं, बहुत मैंने देखने की बात है। अव्वल तो ये कि वो कह रहे हैं कि इसमें हिंदू जो नहीं है उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा। समझ लीजिए कि इसका मतलब तो भाई नागरिक कौन है भाई, आपके वोट के अधिकार को वो धर्म के आधार पे छीनेंगे। ठीक, उसके बाद वो कह रहे हैं कि संविधान जो है वो इसमें कह रहे हैं कि संविधान इसमें सिर्फ भारत की बात नहीं, वो अखंड भारत। भाई ये तो गजब का सपना है। अखंड आपको कौन दे रहा है? नेपाल आपका हो जाएगा, भूटान आपका हो जाएगा, श्रीलंका आपका हो जाएगा। वो अपने प्रेसिडेंट को भगा रहे हैं, वो तानाशाही कर रहा है, तो आपकी तानाशाही वो मान लेंगे? किसको आप मूर्ख बना रहे हैं? ठीक है, किसको मान रहे हैं कि भाई वो तमाम आपके अगल बगल के देश आपके हो जाएंगे? ठीक है, और अब उसमें वो लेकिन ये कह रहे हैं इसमें संविधान के बारे में, कैसा संविधान? इसमें सबसे मजेदार बात है कि आज हमारे पास में संसद है ना, संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। ये सीधा कह रहे हैं कि भाई साहब संसद नहीं, वो धर्म संसद होगा। तो आप किसको चुनेंगे? आप धर्म संसद चुनेंगे। तो वोट भी जो देंगे उसमें ये नहीं कि भाई धर्म संसद जो होगा तो उसमें जो धर्म गुरु चुने जाएंगे, ये क्यों आपकी बात मानेंगे? ये जनता की बात क्यों मानेंगे? क्योंकि वो तो धर्म संसद की बात है। तो वो तो कहेंगे कि भाई हमें तो सीधा भगवान ने दिया बताया जो करना है, हम आपकी बात काहे सुने? आप कौन से भगवान है हमारे? तो लोकतंत्र की जो बेसिक बात है, और दुनिया में ऐसे किसी भी देश को ले लीजिए जो धर्म के आधार पर चलाया जा रहा है, और वो तो भाई काफी तबाह देश होता है ये, और ये हमारे देश को भी उसी तरह से तबाही में घसीट रहे हैं। तो इसमें हम कैसा चाहते हैं? मैं सिर्फ बीजेपी क्या कर रही है और किस नरक की तरफ ले जा रही है उसको मैंने इशारा किया, और वो इशारा और भी फ्रैंको जी ने अभी भी बताया कि आर्थिक स्थितियां क्या है इस देश की, और लोकतंत्र की हालत देखिए। भाई आजाद देश में हमारे जितने दोस्त हैं जो सबसे अच्छे मैंने देश से प्यार करके देश के गरीबों की भलाई के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए काम करते थे, उनकी माने आजादी सिर्फ एक कागज पर लिखा हुआ कोई बात ना हो संविधान, बल्कि वो संवैधानिक अधिकार उनको अपने जीवन में महसूस हो, इसके लिए ये तमाम लोग काम कर रहे थे। जो हमारे दोस्त भीमा कोरेगांव वाले केस में, चाहे दिल्ली दंगे वाले केस में अंदर है, वो गुलाम है। कल हम क्या आजादी के बारे में सोच पाएंगे जब जो लोग सचमुच में लोगों की सबसे अच्छे जीवन, अच्छी आजाद जिंदगी के लिए इस देश में वो जो लड़ रहे थे वो अंदर है। तो उसमें आप क्या सोचेंगे? एक बात। दूसरी बात कि जिस तरह से वो संस्थाओं पे कब्जा कर रहे हैं उसमें तो ये हो गया है अभी कि आप यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप कहिए कि भाई साहब मेरे साथ जनसंहार हुआ, मेरे समुदाय के साथ, मैं आदिवासी हूँ या मैं मुसलमान हूँ, और मेरे साथ जनसंहार हुआ और पुलिस जो है वो मेरा साथ देने के बजाय, मेरे समुदाय का साथ देने के बजाय जनसंहारियों का साथ दी, तो अब मैं कोर्ट में आई हूँ, आप मुझे न्याय दीजिए। ये कोई महिला, चाहे मुस्लिम महिला हो चाहे आदिवासी महिला हो, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट पलट करके इनकी बात सुन करके कहेगी सुप्रीम कोर्ट कि भाई आप कौन आते हैं? अगर आपने सरकारी जो मशीनरी है पुलिस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आपने क्यों बोला, तो आपने आरोप लगाया, तब एक तरह से आप ही दोषी हैं, आप जरूर आतंकवादी हैं, आप जरूर देश का भला नहीं चाहते हैं, और इसलिए आपकी जांच हो और आपको जेल में डाल दिया जाए, आपको जो है जुर्माना भरने कहा जाए। ये हालत हो गए हैं जिसमें यहाँ तक कि देश के जो अदालत हैं उनकी अपनी आजादी नहीं बची, तो किस आजादी की बात करें? आजाद देश में, एक आजाद लोकतांत्रिक देश में सबसे जरूरी ये है कि पुलिस व्यवस्था हो, चाहे कोर्ट्स की व्यवस्था हो, अदालतों की व्यवस्था हो, मीडिया हो, ये सारे जो है वो सरकारी तंत्र से अलग हो, तभी तो जाकर के वो लोकतंत्र कहेगा, वरना तो ये लोकतंत्र होगा नहीं। कहाँ लोक, वो तो तंत्र ही राज करेगा और लोगों को जो है वो जकड़े में रखेगा। तो अब मुझे लगता है कि हम इस पे बस 2 मिनट में अंतिम बात ये कहूँ, बस इशारा करना चाहती हूँ कि किस तरह का देश दरअसल होना चाहिए। अगर आप हम लोगों से पूछें, हम सिर्फ आलोचना करने वाले लोग नहीं हैं, हम सपने देखने वाले और सपनों को साकार करने के लिए लड़ने वाले लोग हैं। हम जानते हैं कि सिर्फ सपना देखने से नहीं होता, और किसी लोकतंत्र में लोगों को रोज सिर्फ वोट नहीं देना होता, बल्कि लोगों को इन्वॉल्व होकर के एक तरह से लोकतंत्र में हिस्सा लेना होता है। लोकतंत्र में लोगों को न सिर्फ अधिकार है बल्कि उनकी ड्यूटी है। मोदी जी कहते हैं कि भाई ड्यूटी आप करिए, आप राइट्स की क्यों बात कर रहे हैं? मैं कह रही हूँ भाई नागरिक की, सिटीजन की ड्यूटी है कि वो सरकार से सवाल करें,
सरकार से जवाब मांगे, सरकार को बताएं कि जो है मुझे ये चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, इस हिसाब से कानून बनाइए, उस हिसाब से नीति बनाइए। ये तमाम चीजें करना जो हमारे मजदूर, हमारे किसान, हमारी महिलाएं, हमारे दलित, हमारे देश की जनता करती है, ये सारा जो है ये करना, ये सिर्फ अधिकार नहीं है, ये आपका, अगर आपने ये नहीं किया तो देश लोकतंत्र बचेगा नहीं, उसमें सिर्फ तंत्र बचेगा और लोग एक तरह से प्रजा बन जाएगा और आपका जो राज कर रहा है वो राजा बन जाएगा। तो अगर हम राजतंत्र नहीं चाहते, तानाशाह तंत्र नहीं चाहते, हिटलरशाही नहीं चाहते, तो आपको एक तरह से लोकतंत्र को बनाए रखना बेहद जरूरी है। तो मुझे लगता है कि वो कैसा होगा अगर हमारे हाथ में होता, देश को कैसे चलाया जाए, ये जो है वो देश जैसे आगे बढ़ेगा तो हम जैसे लोगों को अगर मिले, अगर जनता की, देश की जनता को सही में मिले बनाने को, तो कैसा देश आप चाहेंगे? मुझे लगता है कि बहुत सरल सी, सिंपल सी बात से शुरू किया जाए। बहुत सरल बात है कि लोकतंत्र, लोकतांत्रिक देश सच्चे मायने में हो। मुझे नहीं लगता कि जो 75 साल है उसमें सिर्फ पिछले 8 सालों में परेशानी जनता को रही है, ये हम में से कोई नहीं कह रहा है। मैं जानती हूँ इस बात को कि जो NAPM के साथी हैं वो भी नहीं कह रहे हैं, हम जैसे लोग हैं हम भी नहीं कह रहे। हम तो कह रहे हैं कि जो राज किए इतने साल, वो दरअसल कभी भी उस पूरे चीज को, कहीं पर कुछ अच्छी कोशिशें हुई, कहीं पर बहुत ही गलत चीजें हुई, कहीं कहीं पर तानाशाही के पक्ष में और गरीबों के खिलाफ जो है नीतियां बनी, हर तरह की चीजें हुई। लेकिन हम लोग, मैं मानती हूँ कि इसमें सच्ची जो ताकतें थी, वो चाहे जिसकी सरकार थी, पहले कांग्रेस की थी तो उनके खिलाफ हम कोई कम लड़ते थे, उनके खिलाफ भी खूब लड़ते बोलते थे। फर्क लेकिन ये था कि जब हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं और बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं, तो एक तरह से फर्क सिर्फ इतना था कि कांग्रेस में शायद थोड़ा शर्म था, तो आप शर्मिंदा कर सकते थे, आप कह सकते थे कि देखो आप कह ये रहे हैं और कर ये रहे हैं। लेकिन बीजेपी जो है वो बिल्कुल बेशर्म है इस मामले में, खुल के कह रही है कि अरे भाई हम तो ये तानाशाही कर ही रहे हैं, हम तो जो है वो मनुवाद लागू करेंगे, क्या दिक्कत है आपको, और हम लोगों को जेल भेजेंगे और सारी संस्थाओं खत्म करेंगे और ये तमाम चीजें। तो मुझे लगता है कि वो जो थोड़ी शर्म की जरूरत है किसी सरकार को थोड़ा भय होना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि मैं पैसों से, बड़ी पूंजीपतियों के पैसों से मैं सारा चुनाव मैनेज कर पाऊंगा और मीडिया मेरे हाथ में है, मेरा प्रचार करेगी तो सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंचेगी। ये किसी सरकार को महसूस होने लगे तो एक तरह से उस देश में लोकतंत्र खतरे में जाता है। तो मुझे लगता है कि हमें एक सच्चा लोकतांत्रिक देश होना, इसके क्या मायने होंगे? मेरा मानना है कि वो ऐसा देश होगा जिसमें सबको, सचमुच में सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको स्वास्थ्य सेवाएं, सबको पानी, सबको खाना, ये सारी, और सबको घर, ये सब बेसिक चीजें हैं जो सबके पास होना चाहिए। कोई ऐसा फैंटास्टिक देश जो है वो ये मत बनाइए जिसमें ये चीजें ना हो। लेकिन इसके साथ साथ जिसको बर्टोल्ट ब्रेcht कहते थे कि वो न्याय की रोटी, वो न्याय की रोटी भी उतनी जरूरी है। तो कुछ लोगों ने जब वह वो कभी ऐसा देश बनाते हैं और कहते हैं कि ना ना भाई हमने तो बिल्कुल यूटोपिया बना दिया, बड़ा बढ़िया है, लेकिन उसमें जो है बोलने की आजादी नहीं है, उसमें आप विरोध करेंगे तो उसमें एक ही पार्टी चलेगी और वो जो है विरोध में बोलोगे तो अंदर हो जाओगे, तो मैं कहूंगी वो भी गलत है, बिल्कुल गलत। लोकतंत्र का मतलब है कि बिल्कुल बोलने की आजादी, बिल्कुल विरोध करने की आजादी, बिल्कुल अलग अलग मतों को रखने की आजादी। बस आपका लोकतंत्र का जो हक है वो वहां, जो जेम्स बॉल्डविन कहते हैं कि बिल्कुल आप और हम आपस में बहस कर सकते हैं, हम एक दूसरे की बात नहीं मान सकते हैं और रिस्पेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के डिफरेंस को, लेकिन वो रेस्पेक्ट वहां रुकेगा जहां पर आपका मत जो है वो मेरी इंसानियत को ना माने, मेरी इंसानियत को खत्म कर दे, मेरी बराबरी को ना माने, वहां पर दिक्कत होगी। तो अगर आपने किसी को भी उसके धर्म के, जाति के, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के, नस्ल के आधार पर अगर आपने किसी की इंसानियत को नहीं माना, बराबरी को नहीं माना, तब जो है वो ना अलाउ। तो यही ऐसा देश बनाना है, बनाए तो नहीं है ना, लेकिन बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो लड़ाइयां लड़ते हैं इस देश में, वो जो है आंदोलन जीवी कह करके ये मॉक कर रहे हैं, मजाक कर उड़ा रहे हैं हमारा, लेकिन हम ही वो लोग हैं जो भारत को अपना सबसे बेहतर स्वरूप जो है उसमें लाने के लिए लड़ रहे हैं। पहले से भी लड़ते रहे, आज भी लड़ रहे हैं, बस आज ज्यादा आप लड़वा रहे हैं, भाई आपसे ज्यादा लड़ना पड़ रहा है क्योंकि आप ज्यादा दमन कर रहे हो, लेकिन लड़ाई हम करते रहेंगे, हम कहीं जाने नहीं वाले। आप हम में से कितनों को जेलों में भरोगे, भर के देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि बिल्कुल हम सारे लोग जो हैं वो जरूर ऐसे देश को और ऐसी दुनिया को
हम जमीन पर जरूर उतार के लाएंगे, ये सिर्फ कोई हवाई आसमानी सपना नहीं रहे। बहुत बहुत शुक्रिया Kavita. It is going to be very difficult to be able to put together what you have said and translate it, but I shall try. Thank you for giving us a little bit of your understanding of the way in which the history has treated this whole struggle for independence, and especially the way in which this current dispensation at least looks at Golwalkar and takes their own inspiration from Golwalkar's thinking, which is exactly what they are moving this country towards. What you said in terms of the dream that we have for independence and for freedom, which is a struggle to fight for a better world, there is absolutely no doubt about the fact that all of us here in this meeting share that and share the vision of a world where basic necessities are given to us, where we also have the right to dissent, and where we will fight for people who are in jail, who have been jailed for speaking out and for showing what they really believe in for society. Their commitment, at least, people who are in jail today, so many of them, whether it is the Bhima Koregaon 16, or whether it is people like Tista Setalwad, where we have about 12 journalists who are in jail, and so many activists of the anti-CAA struggle, so many hundreds of people who are in jail just for speaking out and just for looking at a world which is not a world of exploitation and oppression. Thank you so much. We have a few questions and I'd just like to quickly flag them. We have time for some questions. So if anybody would like to, I think there's a question for Comrade Franco here from Suhas of NAPM. He says, please tell us if we can collectively refuse to allow banks to lend our money to Adani, to corporates. How will that work? So, Comrade Franco, if you'd like to take that question, and then I'll... Unfortunately, though the banks are run with our money, we don't have any system or control over how the money is being lent by the banks. Only thing we can demand that we should have equity, equality in the lending policies, and where the money should be directed. That is the priority sector lending, which has been diluted now. And the purpose of nationalization was to take the credit to the common man. That is being removed now. Even the public sector banks are not behaving like public sector banks, like State Bank of India. Today, now they have announced that they are starting a subsidiary which will not have the service conditions of the State Bank of India, and they will be running the branches. So we can only demand certain things. And she had also asked one more question that about the taxing the rich. This is a campaign which is picking up across the world. Chile has implemented it, and many countries are talking about it, that tax the top 2% to 3%. Even just 1% wealth tax on the rich, and inheritance tax for the children of those who are inheriting the huge amount. That will be sufficient for providing education, healthcare for all in this country, which Comrade Kavita was talking about. The 6 basic necessities which are needed. This can be fulfilled by the taxing this rich. It is very much possible. Thank you, Franco ji. I was saying about collective struggle to demand our intervention in the policies.
Sure, sure. Yeah. Any other questions? I have a question for Kavita actually. How do you see the Kavita? How do you see the way in which one can respond to this entire Har Ghar Tiranga and the campaign that is going on right now? Yeah, what I thought was that, see, I know that, in a sense, this symbol is something that the RSS did not initially embrace at all. So I think that the fact that they are now trying to hijack it is also something, of a, even to some extent, a mixed blessing. Okay, because in a sense, they've had to adopt it. This is not their symbol of choice, but right now they feel that they can try and hijack whatever is a national symbol. So I guess that one thing that we should do is to not let go of it. I know that, we should point out, in fact, I meant to mention that also while we were speaking, that look, we should exploit the, we should highlight the voices that are coming out from their ranks. So on the one hand, they are saying, Har Ghar Tiranga, and you check on your neighbor and go harass your neighbor if they're not flying the flag and so on. But at the same time, this is the same in their camp, this Yati Narsinganand and all, they are calling for a boycott of this campaign. So we should point out that, look, if a Kashmiri, with very good right, because Kashmir, Nagaland, these had initially with the autonomy, with the idea of autonomy, they actually had their own flags at a point. And today, if you force this on them, they will be, what if somebody there were to give the same call, then they would have UAPA slapped on them and they would be imprisoned. Okay. But Yati Narsinganand, this is not, there's absolute silence from the Sangh camp on that. So I think that is a way to remind them that their own vestigial, that hatred for that specter of the flag that haunted them then is something they want us to forget. That is a history. But the vestige of that is still there. And it is showing up in this Yati's kind of statement. So what is that attitude and why they did not like this flag that was it was designed by Pingali Venkaiah and as the Congress flag, and then it was made into the national flag by the imaginative intervention of Suraya Tayyabji, Badruddin Tayyabji. So this was a Muslim woman who actually got the flag stitched on the night of on this evening in 1947. And the actual physical flag that was hoisted the next day. So this has a certain meaning, and that is something which we can highlight, and we should also find our own ways of commemoration, as the Shaheen Bagh did, as part of our struggles, as something that is not simply a symbolic celebration, but a moment for introspection. Okay, we have a question from Talha Jabin. He will have to unmute. I think I'll just unmute him. Unmute Taha. So there's a question from 1 minute. I'll just. I think they're not able to unmute, so maybe just give them the option to unmute. Yeah, I have already given. Okay, Talha, आप unmute कर पा रहे हैं? Talha, can you unmute, because I can't seem to do it from here. उनको co-host बना के देखो if it's possible. Okay, I've allowed participants to unmute themselves. So I have already allowed that. Yeah, okay. So go ahead.
You'll Or have to. Geeta, you can take Pragna's question until then. Okay, yeah, sure. But I think we have the same problem. No, she has written it in the chat. Okay. The question that Pragya has, she cannot seem to speak this, I think. I'll have to say it. It says, you can speak, it's the thing. It's like, okay. Yeah. I've allowed participants to unmute themselves. So can you please try if you can? It'll be great to hear your voice. Pragya? hi. Yeah, hi. Come on. तो आजादी के पूर्व संध्या पर सबको जिंदाबाद। हर रोज की लड़ाई है आजादी की, तो हम सब लोग हर रोज आजादी का उत्सव मनाएंगे। हमारे लिए अमृत महोत्सव कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि संघर्ष का अमृत है। मेरा सवाल इतना सा है कि अनफॉर्चुनेटली Indian forces, fundamentalist and fascist forces, are able to have a magnetic impact on youth and aged at the same time. So what can be our strategy to, get the value of Azadi as well as constitutional rights, translating it for them? प्रज्ञा, हाँ, प्रज्ञा ने मुझसे पूछा क्या या सबसे? अच्छा, मुझसे पूछा ना? अच्छा, so I think that, I mean, the question of, yes, of course, the unconstitutional appeals are being made to people of all ages. And I think that, there are two different ways in which I think we can respond to it. One is, of course, to respond to youth. And because youth, I still feel, of course, we know that even in the communal mobs and all of that, there are young people. But I still do believe that where there is youth, there is the possibility of change. There is the possibility of changing your mind, especially when one is young. And I say that from experience, from having, worked with young people and all of that. So I think that, continuously trying to reclaim the idea of, love for your country. What does that mean? Taking it away from the abstract and towards a sense of, whatever is seva. So that seva is not about how can I join a mob, how can I force people to sing an anthem or force people to Jhanda Fehrao, but actually to see how can I serve people. Because we did see, examples of spontaneous service. We see this all the time during the COVID second wave, for instance. We saw this. We have seen this on other occasions also. So how to actually tap into that feeling, of people, and and I really think that that is the key. That the key doesn't lie only in talking about the rights of youth. Constitution, and once they feel this sense of service, I think that, yes, a conversation has to happen about what constitutional liberties and constitutional morality actually means. That this is not just about, the rights or even the cumulative rights of various, fragmented sections of people. This is about certain principles of egalitarianism and fraternity, which apply to all. And some have a much more difficult time due to historical injustice and continuing injustice accessing those. So it is not, so to dismantle the very flat ideas of equality that eventually end up serving the privileged, how to dismantle that, I think that's important. With those who are older and those who are, I think that, it depends, because there are very many ways in which, there are very many breaking points that come for people. There are very many ways in which people in their lives are, they face oppression. My only reminder to myself, I can only share that, which is that whenever I feel a sense of irritation or lack of patience with the kind of bigotries that people show,
I remind myself that, well, whatever those are, some people have to continue to have the duty of finding a point of entry in which to keep talking to people. And so when it is, common people, especially people who are not terribly privileged, I think there has to be a conversation about what is it that they need and where do they need our help. And maybe that has to be the starting point where we actually, then find a way to talk about, constitutional rights and liberties that are denied to others, trying to build empathy and solidarity. These are not easy because we are living in a time where empathy and solidarity are, there is a loud scorning of it which is happening. And there is a very fast attempt to erode it all, globally as well as in India. But I still think that, we should stick to our basic work that we do. And I believe that we can find a way forward. Very important, really very important to do that. Definitely. We have Talha now who says that Yeah, can unmute. And then yes. questions from Ashok Shrimali and Lalita Ramdas too. So Talha, please. Yeah, good evening, everyone. I read one article in Times of India on 13th of August, where they say that Constitution has been drafted and, Kashi would be the capital city instead of Delhi, and then Muslims and Christians will not have any voting right. So this is something that, are these people, ready for a replacement of the Constitution? Are they drafting to a, implementing so fast that we are just reacting? Are we not supposed to do something? Because each time what I feel is they are doing something and we are just reacting to it. So could you just, advise on this? Thank you. Who are you? Are you asking anyone specifically for this, to react to what you said? Or is it Admiral or Miss Kavita, and anyone could answer? Ramdas, if Ramdas, Admiral Ramdas could take that question. You'll have to unmute. Yeah, there you go. Okay, maybe it's interesting, Talha, that you raised this. Just yesterday, in fact, we've obviously all read this, the same article yesterday. I had read about it earlier. And as far as we are aware, right now, this is not something that has obviously been initiated by government. It has been initiated by members of the Dharam Sansad. So therefore, it's very easy for them to be able to kind of, say, well, this is actually to do with a different body and it has nothing to do with government. But I think it's very important equally to understand that the Dharam Sansad is not without total support and in complete cahoots with the regime. And I see this as a very dangerous kind of a development. They're already talking about half of the new constitution being ready in a few months to be presented at yet another Dharam Sansad, I think early in 23. And I was asking the same question, well, just amongst ourselves, as to what is it that we can do, what should we do? I believe that silence is not an option, because that's what tends to happen every time. So even if it is from, say, this forum, NAPM, a number of us groups raised our concerns as to how and why is a Dharam Sansad comprising some 30 very, apparently sort of learned seers and sages and so on. I remember signing an appeal about 6 months ago. There's not one woman in this group in any case. And there is apparently everybody's from, the higher caste. I mean, that goes without saying. But I think we need to challenge, the fact that a group like this can even think of doing something which is totally anti-democratic, anti the constitution that we already have, and at least let us push for some kind of response.
I'm not sure whether that's an answer, Talha, but I'm glad that you raised the question. No, thanks. I really appreciate your reply because that's really a concern, and I need an, certain views from experience, personality, so that, I could also, guide if someone asks me. So I really appreciate for your answer, reply. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Ashok Trimali, you have your hand up. Would you like to speak? Yeah. Hello. Is there any hope to dialogue with the present government on the issue of constitution and communal harmony? Is there any hope of dialogue? Hello? What do you think? Do you think there is any hope? Yeah. Is there any hope that we can initiate a dialogue with the present government on the issue of constitution and the values of constitution? How can we say? That is my question to all these speakers. What are the ways? You have heard the speakers. What do you think? No, but I'm always thinking, can we dialogue with them, or can we initiate some kind of dialogue with present governments, and is there any hope? I think it always lives in hope. Yeah. Yes, Admiral Ramdas. This has always been a problem over the years, but we have, at least if you study the pattern, this is precisely how it functions, or has been functioning, let me put it this way. And anytime anybody tries to raise a question, this is the Kamnagana, usually happily consumable commodity that they have sold, saying, look, we have done nothing, etc. But I agree with you that we cannot just sit quietly. We'll have to do something. So I have a very good idea if somebody is willing to do that, because I wish I was 20 years younger. I would have caught the bull by the horns. But right now, I think what we need to do is say a small delegation, at least start with a writing to say you would like to meet X, Y, or Z. I mean, whoever it is that you think is responsible for whatever it is, and say that, look, the constitutional authority in this country is the Chief Justice of India. So let's write to him. There's nothing lost in writing to him, although we know what it might, the fate it might have. But to keep on pounding, sending letters, whatever it is, he can at the most postpone it or delay it. If he does that, or whoever it is does that, I think we can keep banging away. And during that period, believe me, nobody will dare issue or change a constitution just like that. Because no Chief Justice of India wants to be told or made to be, or the nation to know that, look, he's siding with the government. So up to a point, we can keep quiet. I think the question also was, can we dialogue with the government on communal issues? No, you see, no, but you see, the communal issues is something which has been happening for some time, which is totally abhorrent. But the point at issue is that if we go to them, they will ignore it, because I have written many letters and, I don't even get an answer nowadays. Doesn't matter, but I keep writing them. The point at issue is simply this, that they know very well that this is something that may be injurious to health, quote unquote. And therefore, I think they will be a little more careful, because if you notice now, a lot of things seems to be happening as though, oh, they know it all, and they just want to avoid one name, and that is one first Prime Minister of India, nothing else. At the moment, that is their main concern. They don't want their same things to come back into the system. But we as the people are not interested in all that. Who is the system, who is not the system? We had the problems in 1984 when the Sikhs were all butchered in Delhi. I know that. The point is that we have a lot to do before we can come anywhere near
belling this runaway animal at the moment. So I think we have to keep on trying, and I think we are reaching a very crucial moment in our history that we have to do it. Doesn't matter what happens, because unless we show some kind of unity and sense of purpose, this will again wilt away, and then it will become business as usual, and we don't want that, business as usual. So I can't think of any other option at the moment, and we don't want to use and fall into this military action of using violence, this, that, and the other. That will create absolute havoc in this country, and that's possibly what they would like to see in our land. And then everything is haram scaram. Then they say, oh, national emergency, karo, band karo sabko, stop everything. This is our national interest is more important than falana, falana, falana. So I think we should not let them have that opportunity. Give them that opportunity, but keep. It's like throwing darts on a dartboard. I know you might miss it, but once or twice it will hurt when it hits. I think there is something in it when you see various situations in the country. Yeah, I am no magician, but we can try. There's an incredible lack of accountability, which this government has perfected. I mean, we have a prime minister who has not addressed a single press conference since 2014. So, the question of a dialogue really is something that we will not give up on. Obviously, we will not give up on it. But we have to know who we are really faced with and who we are seeking that dialogue from. There's one more question. There are comments actually which are very good. There is one suggestion which has come from Usha Rani, which is a National Fact-Finding Committee on Issues of Economic Distress and its effect on children, poor women, old, documentation of this. It's absolutely important. It needs to be done. Comrade Franco wanted to make 2 points. Yes. So if you could... Some are a response to the questions. Yeah. Number one, about the religion being misused. What do we do was one question. See, religion has not taught us hatred. The religion has always talked about love, but here these people are talking about hatred and dividing the society. So I keep quoting the speech of Swami Vivekananda, which he made in the Congress of Religions in 1819, where he said that I feel proud to be called as a Hindu because my religion accepts all other religions. And I feel proud to call myself an Indian because my country has accepted people of all faith. So that kind of a campaign we have to do with the people. And Umar Khalid and other people who are in jail, a bigger campaign has to be done. Today, the middle class, the problem is that they are not bothered about what is happening around. But what happened during the Hitler's time, which was narrated by Pastor Neumüller, that first they came for the Jews, I did not react. And then they came for the communists, then they came for the Catholics, I did not react. Finally, when they came for me, there was nobody to react. So people have to be mobilized. Umar Khalid actually spoke in in Jantar Mantar along with me in a Save Public Sector campaign. But today, there are not many people fighting adequately. We have to strengthen it. And another thing which in the banking system, 10 lakh crore has been written off in this period of 8 years. And that has been to help the corporate. This also has to be exposed and told to people. Finally, there are positive things emerging. We have a People's Commission on Public Sector and Public Services,
we are bringing out a lot of reports on what is happening in the country sector-wise. It is headed by Dr. Thomas Isaac, former Finance Minister Kerala, and there are a number of civil servants retired, including former Finance Secretary S.P. Shuklaji and others, which are that is a positive thing. Secondly, last week we had a discussion among Jan Sarokar on what is to be done for the change to be brought in, and we have number of networks. NAPM is a large network. MKS's work I could see in the villages of Rajasthan, and I have written an article a few days back. And Jan Sarokar has huge network, more than 36 organizations, which themselves are networks. We have Vikalp Sangam. Like this, we have to bring in together all, and there is already people are coming together for an alternate agenda for the country. What is really needed after 75 years of independence, what we really require for the people, that agenda has to be put in quickly. And lastly, yesterday, there was a meeting in the Constitution Club where 11 political parties and civil society came together, where a number of retired civil servants also joined in the name of Constitution Conduct Group. So there has been an effort to change the pattern in the electoral system. 3M, that is machine, money, and media. What is to be done? A large campaign has been planned. Similarly, a campaign for real equity, equality, and social justice has to come up, and it is. I am confident that from the results I have seen in the banking sector, FRDI bill we could oppose and get it withdrawn, and the farmers could get these 3 laws passed through their struggle. So there is positive hope that with the support of the farmers, the workers who have come together to fight against this amendment to the trade union laws, all of them together, along with civil society, we can make the change. We will make the change. Thank you. Thank you. Thank you so much, Mr. Comrade Franco. We have comments which are still coming in the chat box. Akhileshwari has a question about religion being a weakness of the people that the BJP is exploiting. We also have another comment about the alternative constitution. There's a very good suggestion about sending mass appeals on the release of people who are in jail, activists who are in jail. I'd like to invite Kavita and Admiral Ramdas to make some concluding remarks, and then I think we will need to end today's session. So, Kavita. Oh, I think I've said all I want to. I'd like to listen to Admiral Ramdas. So I've said everything I need. Any concluding remarks also on that question which was asked about religion being made use of? These are things that we really are battling. Well, I just want to thank everybody, and particularly you, Geeta, because you've been very good to all of us by giving us time and space and what have you, for the all of us to be able to share our views and thoughts and ideas. I think one thing seems to be a sort of a garland which is slowly forming. And I was just wondering whether all these various organizations, and some of them very big ones, as we know, can perhaps come together. Mira can perhaps help for NAPM, and like that we have Aruna Roy's thing in Rajasthan, and in South India we have Deva and Franco and company. So there is a lot we can do without necessarily the Sarkar getting not yet worried, if you see what I mean. They have to take cognizance of all this that's happening. And I think slowly we start doing this. 2 organizations will become 3, 3 may become 5. This is a process which will take a little time.
But I think this is important that we do and show a little patience. And I think I'm almost certain it's not so bad as it looks, because there are many ways. And often these very big time, I mean, I had this experience in Gujarat, I've had this experience later. And I think all this can be very easily put together, and hopefully it will be. And then off we go. That's it. I have nothing more to say except to say once again, thank you all very much. Everybody has contributed something or the other who has been here. And even those who participated have done well to be a part of us. I will ask my other half to say some. Which I've been actually wanting to. I won't take too much time, Geeta. There were two questions or comments earlier on. And I think we have to take some note about one being the kind of mesmerizing impact that, say, the few spokespersons or the kind of policies and the kind of style of the current government, which it's making on young people and on sort of older citizens. Why is that happening? What is it that is reaching out to them, which others haven't been able to do? I think we need to do some serious thinking about what it is, and therefore, how do you address it? I think the second point, which has emerged over and over again, is the role of religion and the fact that whether we like it or not, this is one of the very major factors which is existing right across from north to south, east to west in this country, and which informs a large number of people, not necessarily in a virulent, hostile manner, but somewhere I feel our failure has been, as progressive activists and so on, actually not to reach out to a huge section of them who I don't think are, as I said, virulent or very, the bhaktas and the way they go today. But किस तरीके से उनसे हम लोग जुड़ सकते हैं, understand mindsets. And that brings me back to the issue of shiksha and awareness raising and conscientization and talking to, whether it's youth, whether it's women. There is a fear which has come from very early days of speaking out. So it's something that I think, again, long term, but we need to be addressing that in whatever circles we work. If we are teachers and we know what we need to do, or bring others together who will in fact really infuse people with a sense of confidence, courage, and the fact that there is nothing that we actually have to fear. अगर हम इतना तो कर सकते हैं, मुझे लगता है at least we will feel that we are making some kind of, concrete steps forward. So that's really all I wanted to say. And I think that, Kavita, you were going to add something, and I'm sorry I interrupted you at that point. But thanks again. It's been a great evening. Really wonderful to be here. Thank you all. I think we've been, Kavita, is there something you'd like to add? No. There was nothing. In fact, I was just listening avidly. That's all. Nothing else. Thank you all for being part of this discussion. And I think I'm just left with the sense that we really have to stay the course. And what all the speakers gave us today, I mean, every single one of you, was that there is an attempt, there's a very strong attempt, and there has been for several years now, an attempt to create a consensus of what India is going to be for the next 100 years, perhaps. And we are all able to say that this is something we do not subscribe to. We do have a different vision, a vision of inclusive, equitable India, which is not, an India which will oppress or divide, and definitely against an India which is based on the kind of hate that is being peddled right now. So, so definitely Azadi will continue to be a very strong slogan. And thank you all for speaking so strongly and so clearly in today's session.
was a privilege to have to moderate this session. Thank you so much, Meera. And we will be seeing you again in the 83rd and definitely many more of the Grounded Voices series. You are staying the course, and you're giving us the opportunity also to do so. Thank you. Thank you, NEPM. Thank you so much, Geeta. I think this is one of the other marathon sessions. We've had it for a good 3 hours, but extremely engaging, also with a lot of audience questions and the comments and interventions. And thanks to all the 5 speakers. Ulka and Nargis have not been able to stay for the full length, but I am sure they will listen to the conversation later. But thanks so much, Ramu sir, for writing up that entire presentation. I think it was extremely significant to start with that. And we hope to also have it translated into Hindi so that more people can access what you presented. So we'll try to. And also Marathi for Andolan, if he allows us to. Yeah, definitely. Yeah, in multiple languages. All the languages in multiple. Yeah. And Kavita, thanks so much for share translating. Actually, Kavita also helped with so much of translation in addition to actually a lot of political insight. So thanks so much. And this is a very significant session, I feel, because I mean, as we also speak of this alternate so-called constitution or the other constitution that the Hindutvawadis want to bring in, I think today's evening, we also mark this as some kind of a beginning of another long struggle for the next 25 years at least. So a lot of issues that all of you have raised, all the 5 speakers in today's session, would be something that we will have to keep going back to and have to keep working on much more. Of course, there is so much happening and many of us are part of so many processes and alliances, but there is still so much more to do at multiple levels constantly. And I hope we are able to sustain that and intensify all of that. And this brand of conversations that we are trying as part of Grounded Voices is just a very small attempt to keep many of these voices and conversations alive at a time when many of our voices are being throttled. So this is just one part of that broader attempt. And of course, on-ground attempts in different ways, on-ground organizing, there is absolutely no substitute for that. And the conscientization, I think, as Lalitaka very rightly said, is one very significant component of organizing. So that is also extremely significant that we should intensify even further. So thank you so much, all of you. And while you were speaking, and we talked of AMRIT KAAL, which is talking of 25 years of struggle, taking it on to the 100th year of independence. Throw AMRIT KAAL at them with a whole different content, meaning, direction, and power. I think that's what we now need to do. Yeah. So we should chart our own course for the next 25 years, and we should do that. Yes. Okay. Yeah. Thank you, everyone. Zindabad. Thank you. Bye, Zindabad, everybody.